A very good morning to everyone. So, I, Professor Vivek Joshi, again heartily welcome all the students on day 3 of online summer bootcamp 2022. So, today our first session will be on the 3D printing technology. So, to give in depth information about 3D printing technology, today we have Professor Nirav Rathod from Mechanical Engineering Department. Professor Nirav Rathod is a senior professor of Mechanical Engineering Department. He is pursuing his PhD in Mechanical Engineering from Gujarat Technological University. He has published amples of research papers in reputed journals and conferences. Nirav sir is an authorized trainer for CSWA Mechanical Design SolidWorks. He has successfully completed examinations of CSWA Additive Manufacturing, CSWA Sustainable Design, and CSWA Mechanical Design conducted by Dassault Systèmes France. He is also authorized trainer of Creo, PTC University, USA. So, on behalf of RNGPIT Institute of Technology, I heartily welcome Professor Nirav Rathod, and we wish to thanks Nirav Rathod sir for his valuable time for us. Now I hand over session to Nirav Rathod sir and request sir to please enlighten us with your knowledge regarding 3D printing technology. Over to you, Nirav sir. Thank you, Vivek Joshi sir, for the introduction. Now, dear students, without wasting time, I would like to start my presentation on 3D printing. So, just let me share my screen. Is it visible, sir? Yes, sir. Your screen is visible, sir. You can continue with. Okay, dear students, today we'll see very important technology that is named as 3D printing technology. That is the family of additive manufacturing, rapid prototyping, and it has brought the revolution in manufacturing industry. Because and nowadays it is the trending track technology in almost every fields. When you start from mechanical engineering, from manufacturing side to medical side, it is trending now. So we'll see some of the basic methods or some of the basic technologies associated with 3D printing. So overview of my presentation is this terminologies, because you are students of 12 science, 11 12 science. So probably you will not have an idea about manufacturing. So I'll start with the basics first. The difference between the manufacturing methods, what is additive, what is subtractive manufacturing, we'll discuss this. Then after we'll move towards our main topic, 3D printing. Then after applications, which are the various technologies and supports available here in RNGPIT for the 3D printing, and miracles of 3D printing. So these are the basic overview of my presentation. Let me start with the very basic terminology. If you divide 3D printing, then you can say you have two words. One is 3D and second is printing, and we all are aware about both these words, 3D and printing. 3D, we know that something that has three dimension: length, width, and height. And printing, we use our desktop printer to print our writing documents. Ultimately it is a 2D image. So we can say that 3D printing means we have to print. That means the machine that prints in three dimension. So that is the basic. If you see what is 3D printing, basically you can say that some machine or some method or some technology that prints the whole object in three dimension. That is the meaning of 3D printing. Now, before moving towards the main topic, we should
have some basic fundamentals of manufacturing. And for that, uh, let me start with the basics of manufacturing first. So first, there are three manufacturing methods, actually types of manufacturing methods. First is uh, subtractive manufacturing. Second is additive manufacturing, and third one is formative manufacturing. Now, subtractive manufacturing, as the name suggests, subtractive, that means what? Some things needs to be removed, correct? Subtract. So here there are traditional machines that are using this particular technology, and here material is removed by means of certain tools, by using various machines like drilling machine, milling machine. Here you can see one image here with the help of this cutter. You can see this is the cutter, it is rotating, and as it rotates, it removes certain material. You can see here the chip is coming out. We require this slot, and to make this slot we are using this particular machine, this particular tool, to remove the material. So here whatever object we need to make, we want to make, that is by simply removing the material. So that is known as subtractive manufacturing. You have to remove the material. So traditionally, if you see the various manufacturing industries, fabrication industries, here you can see in that industries there are conventional traditional machines, and by using that machines they make their object or their final design. So that is your subtractive manufacturing. So ultimately, one thing is for sure: for subtractive manufacturing, you require certain stock. Okay, and from that whole stock, you have to remove the material to get the final shape of the object. Here you can see a simple image animation file of the milling machine. So there are plenty of other machines also, depending upon which operations you want to do. Suppose you want to drill a hole, then you require a drilling machine. So ultimately drilling is also, you can say, with the help of drill tool you are removing the material, means you are subtracting the material. So that all these traditional methods, manufacturing methods, comes under subtractive manufacturing. Next is additive manufacturing. Now additive manufacturing is what? Here with the help of certain technology, what we are doing, we are generating, or we are making an object layer by layer with the help of 3D printing machine, or with the help of various 3D printing technologies. Ultimately, as the name suggests, additive manufacturing, we are adding certain material directly, layer by layer. You can see here in this left animation, this is this orange one is the object we want, workpiece, and from this machine you can say here the layer is coming out, and it is making object layer by layer. So this is additive manufacturing. Here you can see the pipe. Here this is the pipe. So pipe is made using this particular technology, 3D printing technology, layer by layer. Ultimately, here I need to add two things here. First is additive manufacturing. How it is different? We are simply directly adding the material. We are not removing any material. So first is additive word, and second terminology is what? Here it is. It comes under rapid prototyping manufacturing. So rapid, that means fast. If you want to make a fast prototype, then you can use 3D printing technology. Then here the parts are generated layer by layer. That means you can say you will have different cross sections. So based on the dimensions of the cross sections, the machine will create layers one by one. First layer, then second layer, and then third layer. And obviously that particular material that is coming out from the mechanism or from the nozzle, it is having some temperature, and because of that the first layer and the second layer will fuse together because of heat. So additive manufacturing, if we conclude here, additive manufacturing is what? Here it is the 3D printing technology that uses
the addition of material to create a final physical 3D object. So એટલે એવું કહી શકીએ એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે અંતિમ ઓબ્જેક્ટ 3D ઓબ્જેક્ટ બનાવવા માટે મટીરિયલનો ઉમેરો. You have to add some material to get the final shape, final size of your object. So here you can see the animations. We'll see, this is your FDM technology. We'll see FDM technology later in the upcoming slides. Now, as now you are aware of what is additive and what is subtractive, let's see the basic comparisons between these two technologies, additive manufacturing and subtractive manufacturing. Suppose, let me start with this 3D object. I want this kind of object, this kind of shape, having this 4 holes here at the face, this face, front face, bottom face, the side face, and the top face. Now I want to create this particular object for, let's say, particular application. Now you can make it using 2 methods. One is subtractive and one is additive. So suppose I want to make it using the conventional method, let's say subtractive method, then I have to use some machine, conventional machine. So I'll be using drilling machine here. So this is the symbol of drilling machine. This is the material. The material is in the stock. That means it is in a stock form, the whole cube, correct? Then what I will do, I will with the help of some machine, here I'm using the drilling machine, and with the help of this drilling machine I will simply remove, I will make the hole and I will remove the material. So you can see this is the final object and this is the waste, the removed material in the subtractive manufacturing. Whereas here you can see in additive manufacturing, why it has brought the revolution in manufacturing industry. You can have this idea here. See, this is the material in a powder form itself. That means it is you can use material in a powder form, liquid form, or a wire form. That depends upon which technology you are using. But let's say here it is in a powder form, and with the help of 3D printing machine. Here, this is a 3D printing machine, and with the help of 3D printing machine, I'm directly making or directly creating the required shape. I don't want to remove any material. So 3D printer will create the object layer by layer as per your design. So this is the final object created by 3D printing machine, and you can see a very little waste here. So if you compare these two, then at the first glance we can say that additive manufacturing, here in this case, the waste material or use of material is, you can say, material is optimized, the use of material is optimized, the waste is minimum, whereas in subtractive manufacturing the waste is too much. So this is the basic difference between additive and subtractive manufacturing. Next, what is 3D printing? So now see, the 3D printing is it process, or you can say builds a 3-dimensional object from a CAD model. Now CAD is computer aided design. Here you have to use some softwares, you have to use some digital file, you have to create a 3D object. Like, say, suppose you want to create gear, so you have to make that gear with the help of some software like SolidWorks, CATIA, AutoCAD. So many softwares are available. Ultimately you have to create some CAD model. With the help of computer you have to create your design, and by using that model you can convert that particular CAD file into a compatible file of 3D printer, and then you can create the object. So 3D printing process builds 3D object using CAD file or CAD model, usually by successively adding material layer by layer. That is, this sentence is very important. We are adding material layer by layer. That is the reason it is additive manufacturing. So that is the reason it is called additive manufacturing. You can see here, you can see this yellow wire. This is the material in a wire form. This is 3D printing machine. This gear is, you can say, right now the 3D printing machine is creating or making this gear. So finally the part is this, and obviously there will be certain little waste. So these are the waste. We'll see in detail what is this support and waste later. So this is a 3D printing.
Now, applications. Why there is a need, or why there is that means switching is required from conventional to this 3D printing, because of so many reasons. So, various applications are what automotive industries, Airbus, then BMW, all these giant automobile industries are using 3D printing nowadays to create their product. Then aerospace industries, whenever you want lighter, you can say uh, uh, lighter parts, then you can use it. That means with the modifications, with lots of researches are there on material, so you can use that material and you can create the various aerospace parts. So in aerospace industries, 3D printing machines are used widely. Healthcare and medical. Now, when I say healthcare and medical, because our organs, let's say, they have the very complicated shapes, designs. So you can create that complicated shapes with the help of the 3D printing machine. You just have to create a 3D model, and 3D print can print it. Then architecture, art and jewelry. Again, the complex jewelry designs you can make it easily using 3D printing machine. Food industries, robotics, then industrial goods, optics, textile, aeronautics, space, and obviously for education. So these are the various applications. uh, 3D printing technologies, how you can create your part layer by layer using various technologies. So here we have some technologies I've written here. FDM, that is the most common technology used in the world to create a 3D part, fuse deposition modeling. Then stereolithography, then digital light processing, selective laser sintering, and other technologies, laminated object manufacturing. We'll see three technologies today due to time limitation. Now, these are the various schematic diagram of the technology. We'll see in detail. I will start with the fuse deposition modeling part first. So here, the thing is simple. See, this is the spool, and from this spool this green wire is coming out. So this material here, material is in a wire form. Material is in a wire form. Mostly in FDM technology, materials used are ABS, PLA, that is polylactic acid, a polycarbonate, high density polyethylene, and PPSU. So in a wire form, the material is coming. So here you can see two rollers, that is, you can say, the feeding mechanism by which the wire is pulled from this spool. Then after the wire is going down, it will reach to this nozzle assembly, because here heater and nozzle assembly. So you can see the here red portion is a heater. So ultimately, depending upon which material we are using, depending upon the melting point temperature, here we have to apply certain heat by you can say the heater. So heater will heat up the material, and depending upon the temperature, the material will melt. As it melts, it will pass from the nozzle, and from the very fine hole of the nozzle it will come out, and this is the platform on which this whole assembly can 3D print apart. This whole assembly will move in X and Y direction, and this table will move in Z direction. Here it is shown clearly. See, by using this simple example, 1, 2, and 3. This is your table. First, this is the nozzle ejecting the molten plastic. This is the nozzle ejecting the. This is a symbolic representation. Nozzle, from the nozzle, material is coming out. Now you can see this whole nozzle assembly will move in X and Y direction. These are the two arrows, X and Y direction. So you can see the material is deposited here as the whole assembly moves in X and Y. So it will create the first layer. After creating the first layer, the whole table will move in the Z direction. Whole table will move in the Z direction, and again this nozzle assembly will move in X and Y direction to create the second layer. Okay, and thereby you can create similarly you can create third layer, fourth layer, fifth layer, and you can create depending upon the contour of your cross section, the movement of the nozzle assembly will be there. So this is the basic fundamental of fuse deposition modeling. The name is fuse deposition.
because we are melting the material, and later all these materials, the layers will be fused together by the application of heat. So this is fused deposition modeling technology's basic principle. You can see this is the GIF file of FDM technology. This is your nozzle. From the nozzle, the material is coming out and it is moving in X and Y direction. The bolt is creating. This you can even see the layers, various layers. Right? So this is how it works. The material is coming, bead is going down, and it is generating the object layer by layer. uh, when you see the 3D printer machine, you can that means some basic elements should be there. So here you can see the anatomy of 3D printer. First is filament spool. That means this is the reservoir, or you can see the material will coming out from this filament spool in the FDM technology. Here you can see this is the filament. The wire is coming out here. This is your nozzle and heater assembly. It is known as extruder. It is known as extruder. This whole assembly is known as extruder, in which there will be a feeding mechanism, rollers will be there, nozzle is there, and heater is there. So this is the hot end. Here cooling fan is required. Some display will be there. This is the print bed on which the 3D print, you can 3D print a part. So bed is there. The bed can move in Z direction, and this whole extruder will move in X and Y direction through these arms. Now, depending upon which 3D printer machine you are using, you can have various variations in X, Y, and Z direction. So this is the anatomy of 3D printing machine. Now, what are the limitations here or advantage? We'll see advantage and limitations both. You can see here, you are printing certain object like this. So whenever you are creating some object with the help of FDM machine, and if it is overhang less than 45 degree, then you require certain support. Let's understand ABCs of this FDM support first. Now ABCs are what? It is also known as YHTs of FDM, view reposition modeling. Let's understand it. Suppose I want to 3D print this Y. I want to create this Y. So here what is happening? I require certain support. You can say it is this the below platform. You can say this is the base of Y. You can easily create it because it will not require any support. But when you see this branch of this Y, it will require certain support from the bottom. Otherwise, it will fail. So H, suppose the object is like this 90 degree, this horizontal bar and this vertical arm, then you will require this kind of supports. These supports you can later remove with the help of various instruments of post processing. Similarly, T, you can see I want to create T, then these are the supports. Automatically 3D printing machine will create the supports, and later you can remove the supports. And suppose you are not using any supports, then you can see here this is the T, and it fails when printed with FDM without any support structure. So that is the reason supports are required depending upon the orientation of the object. Here you can see a turbine image shows the turbine blades, and these are the various supports to create the final object. So supports are required. You can use different material for support if you are dealing with two extruder 3D printing machine. Now, whenever you create a 3D create a 3D print using FDM technology, the support can have two different orientations or two different types. First is your lattice structure, and second is your tree support. Here you can see this L is printed with the help of this support. This support is your lattice one. Here the supports are in a tree form. So this is your tree support. Dissolvable supports are also there. Means what? We will use the dissolvable material to create the support, and later after 3D print,
you can simply sink your part into a chemical and automatically the support will dissolve. So what it will do, it will improve the surface finish. You don't have to remove the supports with the help of some instruments, correct? It will automatically dissolve. So different types of support materials are there. So this was all about fuse deposition modeling, the very common technology used nowadays, and it is mostly used for POC, that is known as proof of concept. Means suppose you have some idea and you want to prove it, then you can first make it using 3D printing machine, whatever is your idea, and then you can show it or you can present it. So proof of concept, it is widely used. Now next is selective laser sintering. Again, in the selective laser sintering technology, the funda is same, but the material is in a powder form. You can see here three beads. That means on the bead, the material is in a powder form. The concept remains same. This is some heat source. From the heat source, the laser beam is coming out, and depending upon the trajectory, the laser will move in X and Y direction. And as the heat is applied to the powder material will fuse together, or it will be sintered together or cured together. So the funda remains same. The laser is coming out here. You can see in the animation. This red one is your workpiece. From here, the heat source is applied, laser beam is coming, and depending upon the contour of your cross section, this laser will move in X and Y direction. And as it applies the heat on a powder material, it will fuse together. It will be sintered together, and then after that the blade will move in z direction, in the negative z direction, and this blader will move to level up the powder material. You can see this round bar, or this is known as blader, that will simply move to level up the powder material. And again the second layer will be generated, again the blader will move, third layer will be generated. So what I mean to say, the concept remains same. The concept of 3D printing remains same. The only new thing is what, here the material is in your powder form. Which materials we can use? We can use nylon material, PA, then polystyrene, thermoplastic elastomers, then PAEK, in this particular selective laser sintering technique. Now, one advantage of this SLS is what? Here you will not see any support, because ultimately you don't require the supports actually, because the unsintered powder will work as a support for the object. Unsintered powder, unfused powder will work as a support for the object. So here you don't require any kind of support. That is the biggest advantage. Then batch printing, that means what? Suppose you require numbers of parts in a single bed, then you can make it. It is, let's say, a mass production. So depending upon the size of the bed, depending upon the capacity of the material, you can start batch printing also. Fast printing is also possible, and dimensional accuracy will be there. Surface finish will be very good, as we are not using any supports. So this is your selective laser sintering. The laser term is there because we are using laser as a heat source, and sintering, that means the powder material is sintered together with the help of the laser heat. So this is your SLS technique. Next is laminated object manufacturing, or it is also known as LOM. Again, the concept is same, but here the material is in a sit form. That is actually a adhesive coated paper. It may be a plastic or metal laminates. Now again the concept remains same. From the heat source, the light will come or laser will come, and it will trace the path and it will cut the sheet. And once you cut the first layer, automatically the blade will move down, and again the new sheet will come, and again the laser will do its work, and then this heated roller will move along the path. And as the layer will have certain adhesive on the top surface, it will stick together. You can see this in the animation. See, first laser is coming out. This is the mirror. It is cutting the sheets here. You can see, after cutting it,
the roller will move. That means it will, because of that heated roller, the two layers will stick together. Then again the next layer will you can cut the next layer with the help of the laser hit. The blade will move in that direction, and thereby you can create the 3D print, or you can make your final object using laminated sheet, various laminated sheets. You can even use metal laminates if you improve the laser intensity. But the disadvantages or limitations are what here. uh, Surface finish will be very poor, because ultimately you are simply sticking the two layers that is made up of paper or plastic. Then it will not produce the good bond between the two layers. Unlike your previous technologies of FDM and SLS, there will be the layers will be perfectly fused. It will be in a melted form, so they will fuse together in a good way. Whereas here you are simply sticking the two layers, so that uh, ultimately will not get the proper bond. And whenever you want to create a hollow part, then it will have some limitations. So this is your laminated object manufacturing. Here you can say the roller, the material is coming in. This orange is your heated roll. This is seat source, mirror. This is your optic head. It will move in X and Y direction. This is the object. This black one is the bed. It can move in plus Z or negative Z. Once you cut the seat will come in the other direction. So this is your waste take up roll that collects the waste seats. So this is your laminated object manufacturing. Then stereolithography again. Here the concept is again same, but the material is in a liquid form. It is a photopolymer. Liquid photopolymer is used, and from the heat source, let's say we are using laser as a heat source. There are various options of heat source. You can use a digital screen, projector. Okay, you can use laser, electro beam. So various heat sources are there, and it will come to these mirrors with the help of lenses, and it will strike to this liquid photopolymer, and depending upon the contours of the cross section, it will cure the liquid material. Here in the animation you can see the material is liquid. Here the below one, this is the image that we want, image of the cross section. So automatically that particular portion will be cured together. And once the first layer is cured, the blader will move to level up the liquid photopolymer. So this is the build platform that can move in that direction. This is the part we need to print, layered part. Then this is your elevator on which this can move. This particular bed can move in that direction. This is known as wet. Ultimately, that is the reason it is known as wet photopolymerization. The technology is known as wet photopolymerization, and this is XY mirror. So this is stereolithography technique, where we are using liquid photopolymer material. So we have seen all three categories. First is the solid material, solid wire form, then powder form, then liquid form. Now, these are the basic ideas of the various technologies like FDM, LOM, SLS, and SLA. Now, what you can do, how you can 3D print a part. So, generally, it requires 7 steps. First step is what? As I told you earlier, you have to create a CAD file, digital file. So that you can do using two methods. First method, you can use your softwares, available softwares, 3D modeling softwares by which you can create any 3D part. And second is 3D scanner. So using 3D scanner also, you can 3D scan a particular part. It will give you the dimension, and based on that you can directly 3D print it. So first is your model creation. Second is Htl file creation. Htl comes from stereolithography. This is the file extension, Htl file, because what we do, we require layer by layer 3D printing. So for that you have to convert the whole object into various slices, so many slices. So for that, yeah, you require certain feature by which you can slice up your part. Generally the 3D modeling softwares, you can directly convert the file into HTML format. So automatically it will convert the whole 3D object into slice form.
Then you have to transfer your htl file, or depending upon which machine you are using, you can simply transfer the htl file. Once you transmit your htl file to 3D printing machine, you have to set up the machine. You have to load, you have to decide certain parameters, you have to decide certain temperatures. So machine setup, then 3D printing machine build. 3D printing machine will build it, or it will create the model by depositing material layer by layer. So here your task is not over. Once you 3D print a part, next is part removal. That means here comes your post processing part. After removing the material, you have to post process it, you have to color it, you have to polish it, you have to paint it. So that is your post processing. So generally, it covers, or this 3D printing process, you have to go through these 7 basic steps, starting from model creation to post processing. So here it is given. Now slicing, 3D printing process, again the same 7 things are given in a symbolic language. This is the cup, or 3D CAD model. We are converting that into number of slices. So this is your htl file. For that you require slicing software. In the slicing software you can decide various parameters, like what is layer height, nozzle diameter, so many things, so density. These are the slices toolpath. This is the machine, 3D printer machine, and it will print a 3D object. Now various slicing softwares are available on internet, like Cura, Simplified 3D, then Tinkering Suite. So ultimately, this particular slicing softwares are used to, you can say, to translate a CAD drawing into a proper STL or STL file, and you can later convert that into G code, and that code you can transmit to a 3D printing machine. So slicing software is required. This is again one zip file. It is creating one whole cup like this. You can see the whole assembly, extruder assembly. It moves in x and y direction, and bed is going in z direction. From the filament spool the material is coming out. Now here RNGPIT, which supports the RNGPIT, our college is having certain resource or supports. So that is mentioned here. First, you require to create a 3D model, you require a SolidWorks software or any software, modeling software. We have the SolidWorks license version. We have authorized training center here. Then Cura software is required, so we have that. Then a machine is required. We have two 3D printing machines, FDM based. So RNGPIT has this particular facilities to 3D print your part. Ultimately, we can say that anything that we can imagine, we can print it. This is the tagline of 3D printing machine. Whatever is your imagination, you can 3D print it. So for that, you require this particular resources. So these resources are available here in CAD laboratory at RNGPIT in Mechanical Engineering Department. I'll show you the videos later at the end of session. Now, which are the miracles of 3D printing machines? What 3D printing machine can do? So I'll start with the medical side. So first is complex organ. So here you can see this is the heart, and already 3D this heart is 3D printed using the 3D printing machine. Even whenever surgical training is required in the medical side, then what they do, they create the complex parts, human organs, and then training is given to them. So for that also the 3D printing machines are used. You can see here this is the model prepared using the 3D printing machine at USA Military Medical Center, Walter Reed National Military Medical Center, USA. So it is used for surgical training also. Then skin. Can you imagine? Even skin can be 3D printed using this machine's technologies, because there are lots of advancement researches are going on the material of the 3D printing. Then this is a 3D printing house in civil side. Even you can say it is already in the application. So many houses are built using the giant 3D printing machines. So 3D printed homes are there. Then boats, future boats, it is already 3D printed. Then the very beautiful example here, it is 3D printing in space. It will give you an idea about what 3D printing can do. In 2014, NASA scientists aboard the International Space Station ISS
and in that 3D printed ratchet wrench, it was 3D printed. The ratchet wrench was 3D printed using a 3D printing machine in the space. The file was sent from the Earth, and the astronaut has created that wrench in the space. So it gives you an idea about what we can do using 3D printing machine. So ultimately, it is about sustainable space travel. Let me show you some videos. Just a minute. Here you can see this Ganesha Murti has been built here with the help of FDM technology at our college. So layer by layer, it is creating the whole object. This whole assembly, this extruder, fan, nozzle, heater, whole assembly is moving in X and Y direction. This one is your printing bed, and this is your 3D printed object, final object. You can see. Not only you can make the simple parts, even you can, with the help of certain, you can say, circuits, with the help of electronics, you can create whatever you want. This is the dancing robot created, printed in 3D printing machine. And last, the animation of, we have seen this. So if you have any question, then please ask or comment, so I can answer it. Hello, sir. Yes, sir. Yes, yes. Right. So, thank you very much, Nirav, sir, Thank you. right, for giving a brief information and in-depth knowledge about 3D printing technology. So, student, when we will schedule a visit of institution for at that time we will try to show this 3D printer, and we will try to show all the models, and we'll try to show practically how this 3D printer will work. Right. So once again, thank you very much, Nirav sir, for your valuable time and sharing the information with us. Dear student, one more information I wish to share with you, that tomorrow, कल शाम को 4 बजे एडमिशन प्रोसेस अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया हुआ है. So this seminar will be through online mode, and some of the important points, like the complete admission procedure, highlights of documents to be prepared for admission, different government financial schemes available for engineering education, tuition fee waiver scheme, parameters to be considered while selection of engineering colleges will be discussed during this online session. So this session will be live streamed on RNGPIT YouTube, as well as YouTube channel, as well as Facebook page. So all students are requested to please circulate this information among your circle, and you also try to take maximum benefits of same. So we will wait for that 10 minutes. So we will have 10 minutes break, and after 10 minutes we will have another session, that is session 2, right? And this session will be on UI UX design, how you can prepare a poster, and what are the design terminologies, and how we can consider that design terminology. So I will meet you again at 11:55 a.m. Thank you, everyone.
Yeah, Jayesh, are you there? Yes, sir. Okay, okay, okay. So dear students, let's start with our second session on the day 3 of online bootcamp. So for second session today, we have Mr. Jayesh Mungara. Jayesh is a prestigious alumni of RNG Patel Institute of Technology. So, it is again an alumni of Computer Science and Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology, and he was very active at during his graduation time. He has a very analytical skill in the field of designing, and he has contributed in many aspects of design during his study. Currently, Jayesh is working as senior developer in uh, Lanet software company in Surat. He has a huge and wide experience in the field of UI UX design, and today we are going to take benefit of Jayesh and we'll try to learn something about UI UX design. So on behalf of RNGPIT Jayesh, we heartily welcome you and thank you very much for sparing your valuable time for us. Now I'm handing over my session to Mr. Jayesh. Jayesh, over to you. Thank you, sir. Thank you very much for giving me this such a great opportunity. And now for the students, as I know that they are beginners in the new field, so I'll try to keep thing as brief as so they can get a Yeah. knowledge Sure, of. sure. Yeah. So So our audiences are from audiences are the students who have just appeared for standard 12 examination. yeah. So we can keep mixing of both the language English, Hindi, Gujarati, Okay. whatever Sure. Sure. preferred to you. Yeah. Sure. Sure. Sure, sure. And You can continue. so I'm presenting my screen. Just a second. Right screen. Okay. So, yeah, is it visible now? Yeah, your screen is completely visible, perfectly visible. Okay. So, first of all, we can start with the introduction slide that this session is organized by RNG Patel Institute of Technology, and the session
our today's motto is the introduction to UI UX. So UI UX is a field for the students which have the creative mind and try to uh, try to get into the idea for the new field. So some of student in our CSE department also, they doesn't like coding but they want to be in the field, so UI UX is for them. So we can start with UI and UX. So term UI and UX will be called side by side. So I think we can mix the language so student get a much better idea. So we can say that UI and UX हम लोग बोलते हैं साथ में, but both thing are different. जैसे UI means user interface and UX means user experience. So जब हम कोई छोटी कंपनी या कोई मिड लेवल कंपनी में काम करते हैं, तो एट दैट टाइम वी हैव टू डील विथ बोथ रोल्स, like user interface and user experience both. So first of all we see that thing that what was the difference between UI UX and the graphics design. So the mainstream we can say is graphics design. So what was the thing in the graphic design we can include. So graphic design में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कोई पोस्टर्स है, बैनर्स है, ब्रोचर्स है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, वो सारी चीज़ें हम ग्राफिक डिज़ाइन में करते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है यूआई और यूएक्स। जो यूआई और यूएक्स इज स्पेसिफिकली फॉर एनी बिजनेस और डेवलपमेंट थिंग, लाइक हम लोग कोई एप्लीकेशन या फिर कोई भी जो हम कह सकते हैं कि जी हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि सबसे पहले एक हायरार्की फॉलो होती है कि हम लोग की जो हमारा कोई भी क्लाइंट है, उसके बाद से हम लोग पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते हैं कि भाई क्लाइंट को क्या चाहिए। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रोल आता है यूएक्स का, यूज़र एक्सपीरियंस। सो यूएक्स इज मेनली डील विथ आर यूजर स्टेक होल्डर्स। सो यूएक्स डिज़ाइनर का क्या काम होता है इन द रियल सिनारियो और इन रियल लाइफ। So in UX department there are multiple roles, like you are a researcher, you are an analytic person. So यूज़र एक्सपीरियंस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग केस स्टडीज़ बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे कोई वोटर आईडी की एप्लीकेशन है, तो जिसमें हम लोग दे रहे कि भाई यूज़र ऑनलाइन वोटिंग कर सकता है, और एल्स वी कैन गो फॉर एनी ई कॉमर्स साइट लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट। सो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि भाई अगर हमारे क्लाइंट ने हमको रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि मुझे इस टाइप का कोई एप्लीकेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि डिटरमाइन करते हैं कि हमारे यूज़र कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक यूज़र के एज ग्रुप क्या हो सकता है। अगर हम लोग कोई गेम डेवलप कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस दैट आर यूज़र इज़ बिलो 25 और बिलो 28, मैक्सिमम बिलो 28 ईयर्स, राइट। सो उसके हिसाब से हमें पूरा का पूरा केस स्टडी और रिसर्च करते हैं कि भाई हमारी जो यूज़र है वो किस किस टाइप से वर्क कर सकता है। सो फॉर दैट I think I can give you a brief example with I think I have with me. So yeah, just a second. Give me a minute. Okay, so over here, yeah, we can see that. Uh, just a second. Don't worry, I'll give you the brief introduction of all these softwares and how we can go through it. But just first of all, we can learn that what is UI, what is UX, and what was the difference between that. So over here, you can see the image, right? This one is the just a demo image. सो कोई भी यूज़र है ना क्या करता है सबसे पहले, अगर हम अपनी बात करें, तो आई थिंक यू कैन सी माई पॉइंटर। सो हम लोग एज अ जिगजैग टाइप में कोई भी एप्लीकेशन स्कैन करते हैं, लाइक ओवर हियर दिस फ्लिपकार्ट ड्रॉ हैमबर्गर मेनू, उसके बाद हम जाएंगे इस तरफ, उसके बाद इस तरफ एंड देन इस तरफ। सो हियर इज द बाय नाउ बटन। So who decide this that buy now button, where we can put this buy now button over here. So this task is for the UX designer, that if I put this button over here, then my user doesn't like this thing because what was happen over here. Then if I am purchasing something from this site or I am seeing this site, then what we have to do that we are scrolling over down, we put our items in our stack, and at that time after when we want to give an order,
सो जब हमें कोई भी ऑर्डर प्रेस करना है या फिर वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस हमको फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऊपर ये बाय नाउ बटन ढूंढना पड़ेगा। तो इस समय रोल आता है यूएक्स डिज़ाइनर का, कि यूएक्स डिज़ाइनर हमें वो देता है कि भाई आप ये बटन यहाँ पे मत रखो। ये सजेशन आता है यूएक्स डिज़ाइनर के पास से कि भाई आप ये बटन यहाँ पे रखो, जिससे यूज़र को कन्वीनियंस ही रहे और एक कंसिस्टेंसी बनी रहे कि भाई क्या होता है यूएक्स में। ठीक है। I think you all get the brief idea that what was the role of UX. That UX designer have to deal with the user, that user how user feel the application, not the look. It's feel about the feel, that if I am a user then I doesn't have getting bored, that I और मुझे क्या बोरियत नहीं फील होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है कि मुझे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगनी चाहिए कि अगर मुझे कोई भी चीज़ में कुछ ढूंढना है तो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगनी चाहिए कि भाई ये मैं कहाँ से ढूंढूंगा, वो उसको सीधा नज़र के सामने मिल जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती है यूएक्स के रोल में। तो यूएक्स डिज़ाइनर जो होता है वो क्या करता है, पहले केस स्टडीज़ बनाता है डिफरेंट डिफरेंट, वो अलग अलग दूसरे दूसरे यूज़र से इंटरेक्ट करता है कि भाई हम लोग कुछ इस टाइप का आइडिया बना रहे हैं, उसमें आप कैसा चाह सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र से वो यूज़र इनपुट्स लेता है। उसके बाद जो यूज़र इनपुट मिलते हैं उस हिसाब से वो क्या करता है, पूरा का पूरा फ्लो डिसाइड करता है, और वो फ्लो फिर जाता है एक यूआई डिज़ाइनर के पास। बट जैसे मैंने कहा कि अगर हम किसी मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ओवर देयर वहाँ पे क्या होता है कि यूआई और यूएक्स का डिफरेंट डिफरेंट पर्सन नहीं होते। इफ़ यू आर हायर एज अ यूआई डिज़ाइनर और यूएक्स डिज़ाइनर देन यू हैव टू डील विद बोथ स्टफ। मतलब कि आपको दोनों काम एक साथ करने हैं। सबसे पहले आपको एक केस स्टडी बनानी है, आप ही यूज़र एक्सपीरियंस सब बना दोगे, उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस का रोल। ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस कैसे कहते हैं कि हम लोग जो चीज़ डिस्प्ले पे देखते हैं उसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस, राइट। तो अगर हम लोग जाए किसी भी एप्लीकेशन पे थ्रू, तो आप इसको ही इसे ही दे सकते हैं कि भाई ये जो दिख रहा है वो होता है यूज़र इंटरफेस। आई शो यू सम अदर स्टफ आल्सो दैट या दिस वन। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये भाई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डिज़ाइन है। ठीक है। तो इसे जो ये पूरा फॉर्म का डिज़ाइन है उसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस, कि जिसके साथ अपने हमारी वेबसाइट है या फिर कोई भी जो एप्लीकेशन है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है तो उसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे यूज़र सब कुछ देख सकता है, क्लिक कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये जो दो कलर्स ग्रीन शेड हमने मिक्स करके यहाँ के बीच में एक थोड़ा डिफरेंट शेड मिला हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये बटन है, स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। आप यहाँ पे इस वाले में देखोगे कि ये बटन स्क्वायर है और इस वाले में ये बटन राउंड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ये इमेज रखा हुआ है। तो ये सब क्या है, इसे हम लोग कह सकते हैं, ये सारे रोल्स आते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर के। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर क्या करता है कि जैसे ही उसको यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर से जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है कि भाई हाँ ये इस टाइप का कुछ है और हमें इस टाइप का कुछ चाहिए, जब भी प्रोडक्ट मैनेजर उसे रिक्वायरमेंट देता है तो वो यूज़र इंटरफेस फिर डिज़ाइन करना शुरू करता है। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन होती है। आप देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, तो यहाँ पे क्या है, यस लॉगिन स्क्रीन है। और ये आपने सारी की सारी एप्लीकेशन में देखा ही होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी एप्लीकेशन में जाओगे एक इंटरफेस आपको दिखेगा। उसमें से कुछ एप्लीकेशन के इंटरफेस आपको कन्वीनियंट हो गए और कुछ एप्लीकेशन में आप ये सोचोगे कि भाई इससे तो अच्छा उस एप्लीकेशन में जैसा है इससे ऐसा ये लोग कर दे। जैसे कि आप हमारी पेमेंट एप्लीकेशंस का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास मेनली यूज़ 3 पेमेंट एप्लीकेशन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। एक पेटीएम है, एक फ़ोनपे और एक गूगल पे है। तो क्या करते हैं कि कुछ लोग पेटीएम को प्रेफ़र करते हैं, कुछ गूगल पे को प्रेफ़र करते हैं। तो अभी ये प्रेफ़रेंस जो यूज़र का होता है, वो कहाँ से आता है? क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट तीनों में सेम ही है कि आप कोई भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो जो ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कुछ ज़्यादातर यूज़र ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो रोल होते हैं यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के बेस पे, कि भाई आपकी एप्लीकेशन का इंटरफेस और आपकी एप्लीकेशन यूज़र के साथ कितनी कन्वीनिएंट है, उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन और वेबसाइट के रीच बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग सोच सकते हो कि कोई अगर एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो और उसमें 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ही वो ऐड पॉपअप कर रहा है, ठीक है? तो क्या होता है कि यूज़र एक 1 घंटा यूज़ करेगा, 2 घंटा यूज़ करेगा, फिर वो क्या करेगा कि भई बोर हो जाएगा और फिर वो एप्लीकेशन ही छोड़ देगा। तो एट दैट टाइम यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैज़ टू बी
कीप इन दैट थिंग इन माइंड दैट इफ अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो यूज़र जल्दी बोर हो जाएगा और उनकी एप्लीकेशन और उनके प्लेटफॉर्म से वो डीएक्टिवेट कर देगा अपना अकाउंट। सो ये सारी चीज़ें होती है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर के बीच में, कि भाई यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर मेनली हैज़ टू डील विद द कलर टाइपोग्राफी एंड the things which will be displayed on the screen, right? Or other than that, user experience designer has to be deal with the empathize, like empathize को क्या कह सकते हैं हम, हाँ तो जैसे उसको यूजर जो उसका एंड यूजर है उसके साथ बातचीत करके पता करना होता है कि भाई हमारे यूजर को किस टाइप की चीज़ें पसंद आती है, उसके बेस से वो क्या कर सकता है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि भाई यूज़र इंटरफेस ऐसा होना चाहिए और इसमें ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे हम लोग एक और बात कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादातर दो चीज़ें होती है, एक सक्सेस बटन होता है और एक डिलीट बटन होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख सकते हो कि आप एक काम करो, कमेंट कमेंट करो कि जो भी है, जो भी आपने जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ की है उसमें सक्सेस बटन कौन से रंग का होता है और जो अपना क्या बोलते हैं, हाँ जो डिलीट बटन और कैंसिल बटन है वो कौन से कलर का होता है। आप जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि भाई कितने लोगों ने सही आंसर दिया और कितने लोगों ने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया है। तो आप ये कमेंट कीजिए जल्दी से फास्ट सारे स्टूडेंट्स। आई एम वॉचिंग दैट कमेंट्स ऑन जस्ट अ सेकंड इन माय अनदर स्क्रीन। फिर मैं आपको ले जाता हूँ कि भाई ये जो कमेंट करवाया उसका रीज़न क्या है, ठीक है। So yeah, jaldi se students. Okay. So after then that, what happens that the major answer was green color for the success and red color for the कैंसिल बटन। वो किसने डिसाइड किया कि भाई सक्सेस के लिए ग्रीन कलर ही होना चाहिए और कैंसिल के लिए रेड ही होना चाहिए। हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं ना, अगर मैं डिज़ाइन एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ तो मेरी मर्जी चाहे मैं वो कलर डाल दूँ, समझ रहे। तो उस हिसाब से होता है ये सब कुछ कि भाई ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर ने अपना इनपुट दिया होगा कि भाई हाँ ये कलर इतना ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई हाँ, रिसर्च एंड एनालिसिस द फर्स्ट पॉइंट दैट व्हाई वांट यू बिकम एन यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर। सो आपको क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है इस फील्ड में आने के लिए। So yeah, no doubt there is a huge salary for experienced UI UX designer in a big great companies, right? But some other things like if you are want to become a UI designer or a UX designer, then you have to be creative, and I think you have to think below the box, not out of the box. That out of the box you can find many things, but below the box, that things you have in that thing, what creativity you can be done, right? So yeah, if you have a great experience with colors and typographies and you enjoy their stuff to play with colors, then this field is all opens for you, like yeah. So over here we can conclude the UX design process, that what was the part of the UX designing. So here we have the five parts. That first one is research, empathize, after that create, test and develop. So ये पार्ट क्या होते हैं यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस में। सो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन का यूएक्स डिज़ाइन करना है तो हमें पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या है। तो रिसर्च में क्या क्या चीज़ होती है कि आपको अपने यूज़र से इंटरेक्ट करना होगा। यूज़र से इंटरेक्शन मीन्स दे आपको यूज़र के साथ बातचीत करनी होगी, भाई यूज़र को क्या चाहिए। तो उसे कहते हैं डिफाइन द यूज़र गोल। आफ्टर दैट यूज़र क्या क्या चैलेंज फील कर रहा है, आप इफ़ देयर वाज एनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन और सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सो यूज़र उसमें क्या क्या चैलेंज फील कर रहा है, तो उस चैलेंज को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च करनी होती है। उसके बाद होता है एम्फोथाइज। सो एम्फोथाइज में क्या होता है कि आप जैसे ही यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यूज़र को क्या-क्या चाहिए, कौन-कौन से सिनेरियोज़ है हो सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस में, ठीक है? और उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं हमारी एप्लीकेशन का भी, हाँ, ये कैसी लग रही है। तो उसे कहते हैं एम्फेथाइज़। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं क्रिएशन में कि भाई अभी रिसर्च हो चुका है, यूज़र से बातचीत हो चुकी है, सारा हमारे पास डेटा आ चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई सिंपल हम लोग उसे बनाने की ट्राई करते हैं। कैसे कि हम लोग सबसे पहले उसे सिंपल वे में डिज़ाइन करते हैं। तो क्या होता है सिंपल वे में डिज़ाइन करने के लिए हम लोग वायर फ्रेम्स बना सकते हैं, मोकअप बना सकते हैं और स्टाइल गाइड्स बना सकते हैं।
तो ये मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि भाई कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती है। और उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि भाई हाँ, हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली यूज़ हो सकती है कि नहीं, उसमें यूज़र ने जो जो चैलेंजेस हमें कहे थे वो चैलेंजेस हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिव्यू, जो यूज़र टेस्ट करता है तो उसके बाद जो यूज़र हमें रिव्यू देता है उस रिव्यू पे हम लोग काम करते हैं कि भाई हाँ, ये रिव्यूज़ है और ऐसे हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद the last phase was develop, that now we have the mockups and wireframes and style guide. After that we have the user reviews, so we can combine the all things and we are now ready to go for the design the production ready application, right? So this is the whole process of the UX design. And now learning things, if you are a student and a beginner in this field, so what was the things you can learn from where you can start. So there are four things to learn in a UI design. Like first one is IA means information architecture. तो information architecture क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी, हम लोग हमारे पास कोई UI और UX हमें डिज़ाइन करना है, तो हमारे पास सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ, इस टाइप की एप्लीकेशन हमें चाहिए, ठीक है। सो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि उसके हम डायग्राम्स बनाते हैं, क्लास डायग्राम है, मॉडल डायग्राम है, UI डायग्राम, UML डायग्राम है, स्टैक डायग्राम। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स डिज़ाइन करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक हायरार्किकल आर्किटेक्चर में डिफाइन करते हैं। तो जब हमें यूज़ करना होता है तो उस टाइम में हमें वो इन्फॉर्मेशन ईजिली गेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वायर फ्रेम्स। सो वायर फ्रेम में क्या होता है, हम लोग एक डिज़ाइन को रफली डिज़ाइन करते हैं इन एनी सॉफ्टवेयर, लाइक जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू that, yeah, we have the wireframe, yeah. So this is the software called Figma, and in Figma they are giving the basic example that what is a wireframe and how we can use it. So yeah, over here we can say that the it contain common modular layouts. So modular layouts क्या होता है, तो yeah, you can see over here in my screen that I think this one is a web page image, right? So here is the navigation bar, here is the image and here is the data. So वायर फ्रेमिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपली डिज़ाइन डिफाइन कर देते हैं। हम लोग ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल इमेजेस सब कुछ नहीं डालते, बस जस्ट एक डिज़ाइन डालते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि भाई हाँ, यहाँ पे हमें इमेज यूज़ करना है, यहाँ पे हमें फ़ोटो यूज़ करना है, यहाँ पे हमें इस टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ करनी है। वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं through the wireframing, right? We can go deep in afterwards. Okay, after that design concept. So डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अब हमारे पास वायर फ्रेम है कि हमें पता है कि भाई कहाँ पे इमेज डालनी है, कहाँ पे बटन डालना है, कहाँ पे कौन सा टेक्स्ट और टाइपोग्राफी डालनी है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको पूरी डिज़ाइन करते हैं कि भाई हाँ, अभी हमारी एप्लीकेशन ऐसी दिखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले दिखाया वो ग्रीन ग्रीन बटन था जो साइन अप फॉर्म था, और उसके बाद एक वो फ्लिपकार्ट जैसा था कुछ, वो सारा मैंने दिखाया। तो वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हमें बनाना है पूरा की पूरी स्क्रीन्स हमें बनानी है कि सबसे पहले जो साइन अप फॉर्म है, उसके बाद लॉगिन है, फॉरगेट पासवर्ड है, उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो कैसे चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम का जो एग्जांपल ले तो उसमें सबसे पहले टॉप बार पे अपने मेनूज होते हैं, उसके बाद नीचे आता है अपनी स्टोरीज वाला पार्ट आता है, उसके बाद अपनी फीड्स आती है सारी, फीड के पास लास्ट में वापस जो सारे उसके मेन्यूज है वो आते हैं। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हमें थिंक करना होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है प्रोटोटाइपिंग। सो जब हमने पूरा डिज़ाइन बना लिया है, ठीक है, तो आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, उस पूरी डिज़ाइन को एक लाइव व्यू में कन्वर्ट कर दें, जिससे हमारे यूज़र को पता चले कि भाई हाँ, इस अगर मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा तो इसका पूरा इस टाइप का इंटरफेस है और मैं इसे ऐसे यूज़ कर पाऊँगा। तो एट द एंड जो डेवलपर है, जो डेवलप करने वाला है, उसे पूरा पता चलेगा कि भाई हाँ, कौन से बटन से कहाँ पे नेविगेट करना है, कौन सी चीज़ से क्या-क्या डील विद करनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है प्रोटोटाइपिंग। तो ये 4 मेन 4 कांसेप्ट है जिससे आप पूरा का पूरा यूआई डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। मैं ये कहता हूँ सीख सकते हैं, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको शॉर्टकट्स पता चलेंगे, आपको थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, ये मैं जो गलतियाँ कर रहा था, कि कॉमन मिस्टेक होती है सम, लाइक वी आर नॉट फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग। सो वो सारी चीज़ें हमको पता चलेगी कि भाई हाँ, ये मैं नहीं करना चाहिए, ये हमारी एप्लीकेशन को बिगाड़ रहा है, ठीक है। सो फिर हम लोग देखते हैं कि भाई हाँ, जो ये मैंने 4 चीज़ें कही, ठीक है, ये तो हो गई थियरी पार्ट, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स टेक्निक्स डिफाइन की हुई है
कि भाई आप सबसे पहले जो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के लिए जो जो टूल्स है, तो आप ये 2 टूल मैंने मेनली मेंशन किए हुए, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टूल्स, लॉट्स ऑफ टूल्स, बट generally user uses this thing, like generally designer uses these tools. So for information architecture we have the draw.io and the creately. So yeah, we can, I'll show you some stuff on the draw.io itself. Yeah, so with the draw.io there are multiple tools like visio है अपना माइक्रोसॉफ्ट का, और बहुत सारे टूल्स है। लेकिन क्या कर, ये जो है पूरा ऐसे, या ओके आई हैव टू साइन इन विथ इट, just give me a moment. Yeah, why, I don't know why it's glitch happening over here. Sorry that it's not opening over here, but yeah, we can go for some other tools like xdn. Yeah, for wireframes, जैसे मैंने आपको अभी फिग्मा में दिखाया कि भाई हाँ ये चीज़ होती है वायर फ्रेम्स, तो आप देख सकते हो पूरी, जहाँ पे ये जो एक नेविगेशन बार है उसका पूरा वायर फ्रेम है कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हम किस टाइप के नेविगेशंस डाल सकते हैं। ये एक फर्स्ट वन है जिसमें सारे नेविगेशन बीच में रजिस्टर बटन यहाँ साइड में, और ये हमारी कंपनी का लोगो है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का है, ये 3 और 4 टाइप्स है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो फिर नेविगेशन हो गया, तो हमें क्या चाहिए, एक हीरो पेज चाहिए, ठीक है। हीरो पेज माने क्या होता है मैं आपको दिखा दूँगा। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन चाहे, so this one is UI designed by me. So over here you can see here is the logo, right? After that, over here a text content, a image. Okay, so this is the full one single page over here. Over here from, so this is the client requirement that user can scroll, but this button want to be disappear, right? So this is the user experience and user interface example. Over here you can see this called a hero banner. सो हम लोग वायर फ्रेम में देखते हैं कि वायर फ्रेम में हम लोग हीरो बैनर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ। सो हमें चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कंटेंट है, यहाँ पे हमारा बटन है जो कि कहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा होगा कि भाई डैशबोर्ड पे या फिर उनके होम पेज पे या शॉपिंग पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इमेजेस होगी कोई भी डिज़ाइनर की और किसी भी, ठीक है। और इसको समझने के लिए अगर आपको समझना है बहुत डीपली, तो आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लीजिए जिसमें आपको बेस थरली का समझ में आएगा कि भाई हाँ कैसे कैसे ये डिज़ाइन हुआ है पूरा। आप देख सकते हैं कि भाई ये पूरा अपना मेन हीरो पेज है, उसके बाद सब हीरो सेक्शंस है कि भाई हाँ एक पूरा जो सेक्शन है उसके अंदर हमारे सब सेक्शंस होते हैं, और ये कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है कहीं पे भी, अगर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। या आप देख यहाँ पे, आई थिंक ये किस टाइप का होता है कि अगर हम अपने स्पॉन्सर्स या कुछ दिखाना चाहते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, छोटे छोटे वो आइकन्स दिखा रहा है और जो भी सिलेक्टेड है उसको यहाँ पे बड़ा आइकन दिखा रहा है और उसकी डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको डीपली दिखाऊंगा अभी, किसी भी कोई हम जाएंगे कोई एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये पूरा वायर फ्रेम है इन फिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन कौन से मेंशन किए हुए, ड्रो आयो, एक्सडी एंड ब्लेसमैक, जो कि अभी जनरली यूज़ हो रहे हैं मार्केट में। तो अगर आपको एक्सडी का इंटरफेस देखना है तो मैं आपको एक्सडी का भी इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ ज़्यादातर दोनों टूल सेम ही होते हैं, और अगर आप बिगिनर है तो आई सजेस्ट कि सारे टूल्स एक साथ मत करिए, पहले कोई एक टूल पकड़िए, उस पर मास्टरी लाइए, उसके बाद आप किसी भी टूल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा एक इंटरफेस फॉर दी एडोबी एक्सडी। आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आपको कौन सी स्क्रीन साइज पे डिज़ाइन करना है। अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन का वेब डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पूरा आर्टबोर्ड देगा, ठीक है। और आर्टबोर्ड के बाद आप यहाँ पे ये सारे आइकन से इस पर आप कुछ भी ड्रॉ या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। लाइक ये स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके बाद इस साइड से आप पूरी की उसकी ओपेसिटी और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरा यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, इसका। और फिग्मा का मैंने आपको दिखाया। वायर फ्रेम के बाद आता है कि टू डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो मैंने कहे। तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि देयर आर मल्टीपल लॉट्स ऑफ टूल्स विच इज़ करंटली यूज्ड इन मार्केट। सो फिग्मा एंड एक्सडी में आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद आता है एक स्केच करके एक टूल आता है जो बहुत पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल होता है अभी की मार्केट में। उसके बाद आता है एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एक्सश्योर। तो क्या था कि जब
फिग्मा और एक्सडी का इतना मार्केट नहीं था इन अर्ली एरास, लाइक वी कैन से इन 2005 to 10 और 2012 समथिंग लाइक। टिल दैट यूआई डिजाइनर एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर यूज करते थे, जिससे वो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते। लेकिन क्या था कि उसमें इतना कन्वीनियंट नहीं था जितना हमें अभी फिग्मा और एक्सडी में मिल रहा है, जितना कन्वीनियंस मिल रहा है आपको। ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो ये बनाने में जितना कन्वीनियंस है, उतना कन्वीनियंस फोटोशॉप और एक्सडी में नहीं था। तो क्या करना पड़ता था, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में नहीं था, तो हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और सब कुछ इंस्टॉल करनी पड़ती थी। तो उसके बाद जब से यूज़र ऑल डिज़ाइनर्स मूव टू फिग्मा, एक्सडी एंड स्पार्क ऑल द स्टफ, राइट। और जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा डिज़ाइन टूल्स है। उसके बाद आता है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि हम लोग ये मेजरली 3 या 4 टूल है, फिग्मा, एक्सडी, इनविजन स्टूडियो और मार्वल। मैं आपको वो फिग्मा में दिखाता हूँ कि प्रोटोटाइपिंग किसे कहते हैं। या तो आप ये पूरा एक है जो कि प्रोटोटाइपिंग का स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप ये फिग्मा इंस्टॉल करोगे ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रोटोटाइपिंग का एग्जांपल मैं आपको लाइव देखा, तो आप जहाँ जैसे ही यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, ये एक पूरा प्रोटोटाइपर अपने को देगा कि भाई हाँ, आपकी ये एप्लीकेशन है और आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। सो या there are 11 screens in this thing. So over here you can see the मेन स्क्रीन। आफ्टर दैट आई कैन क्लिक ऑन टू द लॉगिन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई हाँ, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये लॉगिन स्क्रीन मिली मेरे को, जिसमें मेरे को यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड है डाल के मैं वापस लॉगिन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि ये पूरा एक एप्लीकेशन खुल गया है, जो कि पिंटरेस्ट टाइप का है कि भाई आपको कोई भी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने ये सर्च पे क्लिक किया, ये मेरे को सर्च बार दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं सर्च बार पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा कीबोर्ड ओपन हुआ, डी पे डी क्लिक किया, ये डॉग की इमेजेस आ गई। वापस मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ पूरा, ये पूरा मेरा प्रोफाइल है जो है, ठीक है। तो ये पूरा लाइव व्यू है किस चीज़ का, तो कि जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है प्रोटोटाइप, ये पूरा लाइव व्यू है इस पूरी चीज़ का। और ये लाइव व्यू कैसे जनरेट होता है, तो कि जैसे ही हमने ये पूरी स्क्रीन्स बनाई, हम ये एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इससे पूरा का पूरा वो लाइव व्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि एक जो पूरा एप्लीकेशन डेवलप नहीं है, लेकिन डमी एप्लीकेशन है, जिससे आप पता कर सकते हो कि भाई हाँ, मेरा एप्लीकेशन ऐसे चलेगा, ऐसे दिखेगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोटोटाइपिंग, विच इज़ अ वेरी यूजफुल पार्ट इन आवर UI UX design process, right? So after that, there are 2 or 3 basic concept I covered over here. In that, with the use of that, you can get a brief idea that how I can start and how I can use. So सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी इमेज या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कलर। वे हम कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो here is the color wheel, or you can refer some color theory reference pages or something. So उससे हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी मैं किस कलर के साथ कौन सा कलर यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट हमने किए हुए कैटेगराइजेशन, जिसमें प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर और टर्टरी कलर है। तो सबसे पहले येलो, रेड और ब्लू, ये 3 कलर प्राइमरी है। तो आप देख सकते हो कि भाई हाँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो येलो, ब्लू और रेड कलर है। उसके बाद सेकेंडरी ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन कलर है। तो ये दूसरा आप ट्राइंगल देख सकते हो कि ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन कलर है। कलर थियरी की स्कीमा में क्या होता है कि एक ये ट्राइंगल बना, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा एक स्क्वायर बनता है, ये जो लाइट येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, ठीक है। येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, रेड वायोलेट एंड ब्लू वायोलेट, ये 4 कलर एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। ये 4 कलर का एक हमारा एक स्क्वायर बनता है। उसके बाद एक और ट्राइंगल बनता है, जैसे ये येलो, ब्लू और रेड का प्राइमरी ट्राइंगल बना, वैसे ही हमारा एक ट्राइंगल प्राइमरी बनेगा येलो, ब्लू वायोलेट और रेड वायोलेट का। तो आप ये कलर एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है कॉन्ट्रास्ट। तो आप कैसे कर सकते हो कि भाई येलो है तो उसके साथ वायोलेट जा सकता है, ये है तो इसके साथ ये जा सकता है। तो इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन किया, बाद आप देख सकते हो कि भाई ये है, हाँ, ये 2 कलर कॉन्ट्रास्ट में, ये वहाँ एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, एक फोर्थ है, एक रेक्टेंगल है। तो आप कैसे कैसे कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये है कलर व्हील, ठीक है। लेकिन उसका यूज़ क्या है, तो भाई मेरे को तो जो अच्छा लगेगा वो कलर में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कलर व्हील का मीनिंग क्या हुआ, तो कलर व्हील जो होता है वो आपको करेक्ट कलर स्कीमास डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि आपके यूज़र को पसंद आए और आई कैच यू।
जिससे यूज़र बोरियत ना फील करे, और यूज़र क्या है कि आपकी एप्लीकेशन को सबसे पहले यूज़ करने तक का सोचे। तो उसे क्या, इसके वजह से हमें यूज़ कर सकते हैं कलर व्हील्स। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कलर्स कैसे कैसे है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो ये देखो आप, यहाँ पे ब्लैक है, वाइट है, और ये ग्रेडियंट शेड यूज़ किया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन देखें, हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये ग्रेडियंट के साथ ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ है। और अगर हम इस एप्लीकेशन में देखें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एक येलो टाइप का जो शेड है यूज़ किया हुआ है। और हाँ, इस वाली में तो ये जो लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, उसका मिक्सचर यूज़ किया हुआ है इसमें। और उसके बाद आप हाँ जा सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये ग्रीन और ब्लैक का मिक्सचर यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है। और ये कैनवा की जो इंटरफेस है, आप इसको भी देख सकते हो कि भाई हाँ ये ब्लू है, वाइट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई हाँ ब्लू के कॉन्ट्रास्ट में येलो कलर यूज़ किया कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्लू बटन के ऊपर ये जो उसने क्राउन बनाया है वो किस में, येलो कलर में है, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, सेकंड जो ट्रायंगल है उसमें ब्लू के साथ हम ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो ये डार्क है उसके ऊपर ऑरेंज कलर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये क्या होता है कि एक एक टाइप से यूज़र के माइंड पे एक इम्पैक्ट छोड़ता है, जिससे यूज़र सोचता है कि नहीं हाँ ये एप्लीकेशन थोड़ा अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और एक दूसरी मेन चीज़ जो होती है वो होती है, जैसे ही हमारा कलर्स जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं फ़ॉन्ट्स और टाइपोग्राफीज। तो मैं यहाँ पे एक बेसिकल जो की फैक्टर्स होते हैं टाइपोग्राफी के, वो मैंने कवर अप किए हुए हैं। तो हाँ टाइप फेस क्या है और इसे हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। तो जो की फेस होते हैं हमारी टाइपोग्राफी के, वो होते हैं टाइप फेस, साइज, वेट, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, कलर एंड लेटर केस, ठीक है। तो ये मैं आपको है ना लाइव दिखाता हूँ कि भाई हाँ ये कौन कैसी चीज़ होती है। मैं आपको जस्ट अ सेकंड, आई विल ऐड अ न्यू प्रेजेंटेशन स्लाइड ओवर हियर। ओके, 1 2 एंड 3, या। सो ये आप देख सकते हो, ये 3 मैंने हेडिंग्स यहाँ पे डाले, ठीक है। ये फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। ये थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा, और इससे थोड़ा कम छोटा है। तो टाइप फेस, इससे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, यूजर के माइंड पे हम एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं कि भाई हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये सर थोड़ा बिट लेस इंपॉर्टेंट थिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ब्लॉगिंग साइट या कुछ बना रहे हो, तो जो आपका हेडिंग है वो इतना आई कैची होना चाहिए कि जिससे यूज़र आपको आपकी साइट, आपके ब्लॉग पे इंटरेक्ट हो या आपके ब्लॉग से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये होते हैं 3 टाइप फेज। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो कि सालों से चला आ रहा है वो है हमारे न्यूज़पेपर्स। और न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हो कि भाई एक जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है वो ही सबसे मेन बात होती है। उसके बाद वो सब हेडिंग होते हैं और सबसे आखिर में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो वो इस तरह से डिफाइन किया होता है, ठीक है। और अभी वेट, वेट का आप देख सकते हो कि भाई जैसे जितना अपन गाढ़ा करते हैं उसको वेट बोलते हैं। और फ़ॉन्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ ये रोबोटो है तो ये ऐसा दिख रहा है। फिर अगर हम लोग कोई सांस फ़ॉन्ट डालते हैं कि हाँ ये ग्रिप डालते हैं, तो ये उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये किस बेस पे होता है कि अगर हमारी कोई हम गेमिंग साइट बना रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ॉन्ट ऐसे होने चाहिए जो इस टाइप के कि थोड़े फंकी लगे, ठीक है। और अगर हम लोग कोई गवर्नमेंट साइट बना रहे या फिर कोई ऑफिशियल साइट बना रहे जो कि एक ऑफिशियल इम्पैक्ट छोड़ने वाला है किसी बिजनेस का, तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप के फंकी फॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करेगा कि यूज़र के माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ सकता है कि भाई ये कुछ फंकी लग रहा है, मेरे को कोई ऑफिशियलाइज नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं ये पूरी चीज़। फिर आप ये देख सकते हो कि हाँ जिसमें हम लोग कोई सब सेक्शन बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि भाई हाँ उसमें कौन कौन से टाइप हम कैसे रख सकते हैं। भाई टॉक टू अस है तो सबसे बड़ा है, फिर अपना मेल है एक, ये हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइपोग्राफीज देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट देख सकते हैं। तो और यार आप अगर आपको फ़ॉन्ट्स जाना है तो आप जा सकते हैं 1000 फ़ॉन्ट्स पे, और आप दूसरे डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ट्राई कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज ट्राई कर सकते हैं। 1000 फ़ॉन्ट के साथ साथ हमारे पास होता है गूगल फ़ॉन्ट्स, और सारे के सारे फ़ॉन्ट्स है। अगर आप यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट डाल रहे हैं, ठीक है, ये इस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा टेक्स्ट है, अगर मैं कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा तो वो कैसे दिखेगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो ये एक बात है कि भाई हाँ हमारी जितना हमारा कलर और स्कीमा मेंटेन इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे फ़ॉन्ट्स।
अगर हमने फ़ॉन्ट बहुत छोटे-छोटे रख दिए तो यूज़र क्या करेगा, पढ़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ़ स्क्रॉल करके निकल जाएगा। अगर कोई हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूज़र पढ़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ़ स्क्रॉल करके निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ यूआई डिज़ाइनर को ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि अगर डेवलपर क्या करेगा, आप जो भी चीज़ उसको देंगे, वो पूरा का पूरा डेवलप करके आपको दे देगा, ठीक है? वो ये नहीं देखेगा कि भई हाँ, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो सारे रोल्स होते हैं यूआई डिज़ाइनर और यूएक्स डिज़ाइनर के। फिर आती है लेटर स्पेसिंग और लेटर केस की बात। तो सबसे पहली स्लाइड में हमने जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लेटर्स है, इनके बीच में कितनी जगह है और ये जो लेटर्स है, इनके बीच में कितनी जगह है। इसे कहते हैं लेटर स्पेसिंग। कई हमारी साइज़ है ब्लॉगिंग साइट से, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें हमको लेटर स्पेसिंग डालनी होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा आई कैची दिखे। तो ये होते हैं कुछ फैक्टर्स जो हमें, जब हम बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें सीखने चाहिए या ध्यान में रखने चाहिए। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, जिसमें मैंने ये पूरा डाला हुआ है कि भाई हाँ, ये कुछ फ़ॉन्ट्स है, ये निव्यू, हेल्वेटिका, फ्यूचरा, ये सारे फ़ॉन्ट्स ही है। लेकिन ये क्या है कि कौन से फ़ॉन्ट कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं यूज़र के माइंड पे। सबसे ज़्यादा आज तक हमारे न्यूज़पेपर्स में और सारे में यूज़ होता है ये टाइम्स न्यू रोमन। उसका क्या रीज़न है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है कि एक फिक्स फ़ॉन्ट है, जिसमें क्या है कि वो पूरा एक ऑफ़िशियलाइज़ और एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है। उसमें कोई फ़ंकी टाइप नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक पूरा प्रेज़ेंटेबल फ़ॉन्ट दिख रहा है हमको। तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में वो वही इसलिए यूज़ होता है। तो हमको हमारे यूज़र की नीड्स और सारी चीज़ें समझने के बाद, अपने जो हम रिसर्च कर रहे हैं, एनालिटिक कर रहे हैं, और हमारा जो यूज़र ग्रुप है, जो हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से हमें अपने फ़ॉन्ट्स तय करने चाहिए कि भाई हाँ, मैं ये फ़ॉन्ट रखूँगा, इस जगह पे ये फ़ॉन्ट दिखेगा तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद आती है करियर की बात कि भाई, ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, यूआई यूएक्स फील्ड में करियर नहीं है, ज़्यादा करियर नहीं है, या फिर छोटे टाउन में करियर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, सारी की सारी कंपनीज़ को यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, फेज़ है, उसमें सबसे आगे आता है डिज़ाइनिंग। ठीक है? अगर आप आपके पास एप्लीकेशन का डिज़ाइन ही नहीं है, तो आप डेवलप क्या करोगे? समझ रहे हो? तो हाँ, तो ये बात है कि सारी की सारी कंपनीज़ को यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए, पर क्या एक्सपीरियंस, जो कि यूज़र की नीड को समझ सके और उस हिसाब से हमारे बिज़नेस को वो थोड़ा ग्रो अप कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप किसी स्टार्टअप या किसी नए बिज़नेस आइडिया में अगर आप जा रहे हो, और अगर बाय चांस आपका रिसर्च में थोड़ा भी इश्यू रह गया, और आगे जाके वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है उस बिज़नेस पे, और समटाइम्स वो बिज़नेस डाउन भी जा सकता है, जो ग्रो करने की जगह हमारा बिज़नेस हमको बंद भी करना पड़ता है। तो कई एप्लीकेशंस के साथ ऐसा होता है कि जिसका आइडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होता, तो यूज़र क्या करता है कि भाई उस जैसी उसकी रेप्लिकास ढूँढता है और दूसरी एप्लीकेशंस पे माइग्रेट हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें जो भी करना है, पूरे की पूरी रिसर्च, पूरी की पूरी जो हमारी एनालिटिक स्किल्स है, उसके साथ करना पड़ता है। तो ये हमारी कुछ एमएनसीज़ कंपनीज़ है, जो कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को हायर करती है, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, अमेज़न है, मेटा है। मेटा माने हमारी इंस्टाग्राम, फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। तो और उसके साथ-साथ ये सारी कंपनीज़ आपको ट्रेन भी करती है, जैसे कि गूगल का एक कोर्स है यूएक्स डिज़ाइन, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आफ्टर दिस सेशन आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, और बेसिक क्या चीज़ है वो आप सीख सकते हो। या आप जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे यूएक्स डी सिर्फ इतना ही सर्च करना है कि यूएक्स डिज़ाइन गूगल सर्टिफिकेट। सो आपको सबसे पहले ही लिंक मिलेगा ग्रो डॉट गूगल का, ठीक है? उसमें आप जैसे ही नीचे जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे गूगल के कोर्स दिखेंगे जो कि फ्री है। और जैसे ही आप यहाँ पे ये कोर्स देख सकते हो कि भाई कोर्सेरा के अंदर आपको ये गूगल का यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स फ्री मिल रहा है। तो आप सीख सकते हो वहाँ से कि भाई हाँ, ये पूरा कोर्स है, और ये मैं, जिससे आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। अभी प्रैक्टिस पे आप क्या-क्या कर सकते हो कि आप बिहांस जैसी डिज़ाइन कम्युनिटीज़ है हमारी, बिहांस है, उसके बाद ड्रिबल है। आप उस टाइप की कम्युनिटीज़ में जाके जो डिज़ाइनर्स है, उनके पोर्टफोलियोज़ आप देख सकते हो, और उन्होंने जैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है, हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट स्कैनर एप्लीकेशन का यूआई यूएक्स दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि भाई हाँ, ये कैसा है। देखो, हाउ इट्स गुड। तो ये पूरी केस स्टडी है, जो मैंने आपको बताया कि भाई हमको रिसर्च करना पड़ता है। ये पूरा केस स्टडी है कि भाई हाँ, ये रिसर्च हम कैसे करते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये पूरा यूआई है यहाँ पे।
उसमें अब तक के मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बोले वो सारे के सारे इसमें यूज्ड है। अब देख सकते हो कलर व्हील का कहाँ पे यूज़ है, तो यहाँ पे देखो आप, ये डार्क, ये लाइट, ये जो थर्ड टर्नरी कलर व्हील है उसका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये देखो आप ब्लू शेड में। फिर ये टाइपोग्राफी का मैंने जैसे बताया आपको, ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 3 है, ये बटन टैक्स है, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फिक्स है। फिर कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है वो हमारे ऊपर होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये नहीं, ये करूँगा तो थोड़ा बेटर लगेगा। फिर ये कि डिज़ाइन का प्रोसेस है कि भाई हाँ ये देखो आप, हमने क्या क्या कहा था, सबसे पहले रिसर्च करना होता है। रिसर्च के बाद हमने एनालिसिस किया, प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट किया। प्रोटोटाइपिंग में हमारा सारे स्टेज आ गए, डिज़ाइन फेज़ आ गया, प्रोटोटाइप फेज़ आ गया। उसके बाद यूज़र फ्लो, यूज़र फ्लो हमने क्या किया कि हाँ ये पूरा यूज़र है जो हमारा, ऐसे ऐसे यूज़र्स है, तो जो हमने बताया आपको कि रिव्यूज़ लेने होते हैं यूज़र्स से, ये जाता है यूज़र फ्लो के साथ। उसके बाद आता है डिज़ाइन, कि हम जो एप्लीकेशन पूरा का पूरा डिज़ाइन करते हैं। तो आप ये बिहान, बिहान से ड्रिबल है, ऐसी कम्युनिटीज़ में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो उनके जो डिज़ाइनर्स है जिन्होंने यहाँ पे डाले हुए, सेम रेप्लिका बनाने की ट्राई करो आप, कि भाई हाँ इस टाइप की मैं बनाता हूँ। उसके बाद क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अपनी खुद की आईडी बना के आप अपनी जो यूआई आपने बनाया हुआ है उसको रिसर्च, उसको आप अपलोड करके अब क्या कर सकते हो कि दूसरे डिज़ाइनर्स के पास से रिव्यूज़ ले सकते हो, और उन उस रिव्यूज़ पे भी आप काम कर सकते हो। तो इस टाइप की जो कम्युनिटीज़ होती है, कम्युनिटी में आपको अपना एक प्रेजेंस दिखाना होता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। तो आप अगर अभी से स्टार्ट करोगे, जैसे कि आप बेसिकली आपने स्टार्ट किया विद कलर व्हील एंड टाइपोग्राफी, तो आप उससे एक पूरा एक यूआई मॉकअप बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप जॉब के लिए कहीं पर अपीयर होगे तब तक आपके पास 5 या 6 ऐसे यूआईज होंगे जो आप अपने रिक्रूटर को और हायरिंग मैनेजर को प्रेजेंट कर सकते हो कि भाई हाँ मैंने यहाँ पे इतना इतना ये काम किया हुआ है, आप ये मेरे बेस्ट वर्क से आप देख सकते हो, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि हम अगर यूआई यूएक्स में जा रहे हैं तो हमें सिर्फ कंपनीज में ही काम करना है। फ्रीलांस मार्केट भी बहुत बड़ा है जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये कुछ कंपनीज जैसे मैंने बताई, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनी हायर करती है, हर एक कंपनी हायर करती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी टायर 3 सिटी में और वहाँ उस कंपनी में वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो आपका पे स्केल उस हिसाब से होगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो आपका पे स्केल उस हिसाब से होगा, और उसके साथ साथ आपका पे स्केल होगा आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आपका वर्क है उस पे, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर आपको वो कोर्स का जो है कोर्स है वो अगर आपको एनरोल करना है तो वो कोर्स फ्री है, आप एनरोल कर सकते हो, जो कि गूगल का डिज़ाइन किया हुआ है। और उसके बाद अगर और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे को कमेंट्स थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को रीच कर सकते हो। सभी जगह जयेश मुंगराई नाम है, लिंक्डइन पे या फिर कोई भी जगह आपको मेरे को रीच कर सकते हो कि भाई हाँ अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, या फिर जैसे कि ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि पेड है, जैसे कि इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, ये पेड सॉफ्टवेयर है। तो उसे हम लोग एज अ स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट है तो हमारे पास परचेस करने का इतना बजट नहीं होता, तो हम ऐसे एज अ स्टूडेंट फ्री कैसे यूज़ कर सकते, वो सब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़, दो चीज़ मैं आपको ये फिग्मा का थोड़ा एक बेसिक इंटरफेस दिखा देता हूँ कि भाई हाँ कैसा इंटरफेस होता है। जैसे आप फिग्मा ओपन करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें कुछ प्री लोडेड स्क्रीन्स होंगी जिससे आप बेसिक देख सकते हो कि भाई बेसिक फिग्मा क्या है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये फिग्मा वालों ने पूरा एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है जिससे आप देख सकते हो कि भाई हाँ फिग्मा क्या है और कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। मेन थिंग होती है अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख पाओगे। आप दूसरे ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे को सब कुछ आता है। अगर आपको दूसरे डिज़ाइनर की डिज़ाइन देखनी है, अपनी कमियां ढूंढनी है और उस पर वर्क करना है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि भाई हाँ ये जो पूरा जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए एक मॉकअप बनाने के लिए, ये पूरा इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है कि अगर हम कोई भी नई फाइल में लेते हैं, ठीक है, तो उसका फ्रेम हमें क्या, कौन सी फ्रेम हम कह सकते हैं कि जो अगर हमारा वेब व्यू है, वेब व्यू में क्या होता है कि हाँ आप ये इसे मान लो कि ये जो वाइट पेज है उसे हम कह सकते हैं फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये फ्रेम बना। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या होता है कि भाई हाँ अगर हमारी एप्लीकेशंस है जो भी, उसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट हो गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे एक डॉटेड लाइन मिल गई, यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन मिल गई। तो इसे कहते हैं, ये साइज कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई हाँ ये इन दोनों के बीच में इतनी जगह है, इन दोनों के बीच में इतनी जगह है, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद अगर आप जाओगे
तो भी हाँ कि भाई आपका जो है रिसाइज करना है। रिसाइज में क्या होता है कि अगर मान लो कि ये मेरा बटन है, मेरे को छोटा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपल करोगे तो ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, अगर शिफ्ट के साथ करोगे तो ये पूरा एक साथ होगा कि चारों साइड से एक अंदर का और बाहर का सारा कंटेंट एक साइज चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, स्टाइल गाइड से। तो स्टाइल गाइड्स मैंने आपको सब जैसे पहले दिखाया, आप ये पूरा स्टाइल गाइड है। यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट देख सकते हो कि भाई पूरा कंस्ट्रेंट क्या है। स्टाइल गाइड में अगर आप देखोगे ये बटन है, तो बटन का स्टाइल गाइड क्या है, F2C9 4C, ये कलर कोड है जो कि यहाँ पे हमने डाला हुआ है। इससे भी आगे अगर हम लोग नीचे जाए और इंस्पेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा CSS कोड मिल जाएगा कि अगर आपको ये बटन कोड से बनाना है, कि अगर आपको HTML CSS से अगर आपको कोड करना है या फिर अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे कोड करना है, तो आपको यहाँ पे ये बटन का पूरा CSS मिल जाएगा। तो जिससे आप अपना एक बटन क्रिएट करके उसको स्टाइल कर सकते हैं रियल लाइफ में, रियल व्यू में। ये तो पूरा क्या है कि ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन का क्या होता है कि हम लोग डिज़ाइन का यूज़ नहीं कर सकते लाइव कहीं पे। लाइव पे तो क्या होता है, हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि पूरा लॉजिक बिठाना पड़ेगा कि भाई हाँ ये लॉजिक है, ऐसे काम करेगा। उस टाइम हम पे हमको क्या चाहिएगा कि भाई हाँ ये तो बटन है तो इसका कलर क्या है, ये सब कुछ क्या है। तो पहले हमको क्या करना पड़ता था कि भाई हाँ अगर फोटोशॉप में भी अगर कहीं से भी बनाया है, तो या तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डालना पड़ेगा या फिर हमको एक एक चीज़ खुद से ढूंढ के बनानी पड़ेगी। ठीक है, पर यहाँ पे क्या अच्छा है XD और फिग्मा में कि आपको पूरा CSS कोड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स में और क्या है, स्मार्ट सिलेक्शंस, एक्सपोर्टिंग। हाँ, एक्सपोर्टिंग एक चीज़ है कि भाई अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है, तो उसको एक्सपोर्ट करना है आपको एंड्रॉयड के लिए या अलग अलग चीज़ के लिए। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो फिर आप वो सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, एसेट्स है सारे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी फिग्मा के बारे में। अगर आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को श्योरली रीच कर सकते हो। और वी हैव यूट्यूब, वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप बिगिनर है तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे मत ध्यान दीजिए। सबसे पहले थियरी कॉन्सेप्चुअलाइज क्लियर करिए। जो कि यहाँ पे ये जो कलर व्हील है, ये दिख रहा छोटा दिखता है, सिर्फ इतना ही दिख रहा है ये कि भाई हाँ इसमें क्या है, ये तो मैं एक दिन में याद कर लूँगा। लेकिन इसके जो ये कंसेप्ट है, इसको सीखने के लिए आपको महीना भी लग सकता है। यहाँ कौन से के लिए कौन सा टाइप फेस चाहिए, यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं से पढ़ने या कहीं से सुनने से नहीं सीख पाओगे आप। इसको सारी चीज़ें के लिए आपको चाहिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस। ठीक है, और अगर स्टार्ट करना है तो जो गूगल का सर्टिफिकेशन है वो सबसे पहले वो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद यूट्यूब पे भी कुछ अगर इंस्ट्रक्टर्स हैं उस उनके कंसेप्ट भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, so that's it from my side. If you have any question, you can put in the comments so we can take that. Thank you. Yeah, Jayesh, thank you very much for providing in-depth information about how we can work with the UI UX and what is the importance of this UI UX. Definitely, in future, it will be the prime requirement of all the companies that every developer should have that skill. So, on behalf of RNGPIT, I heartily thank you for providing your valuable time and knowledge with us. So, uh, dear students, our next session will be Okay, on sir. drone technology, and we will be joining within 5 minutes. So, we will start at 11:55 p.m. Right. So, meanwhile, you can have break of 5 minutes, and we will try to learn different drones and how we can deal with that drone technology. Thank you. Yeah, Jesh, you can continue your work. No problem. Okay, thank you, sir. Thank you once again.
Yeah, good afternoon, Hetal sir. Hello. Yeah, Hetal sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yes. So, good afternoon, everyone. So, for session 3, day 3 of online design bootcamp 2022, now we have Mr. Hetal Gandhi with us. Sir is very enthusiastic and have mastery in aero modeling, basically a drone technology. Sir is basically from Bardoli, and sir always used to play with innovative ideas and innovations in the field of drone technology. So today, sir will demonstrate and explain us the different types of drone and a few basic concepts and terminologies of drone. So, Hetal sir, on behalf of RNG Patel Institute of Technology, I heartily welcome you and thank you very much for providing your valuable time for our students. Now, I hand over this session to Mr. Hetal Gandhi sir. Please, sir, over to you. Hello, everyone. આજે આપણે ડ્રોનનો થોડુંક આપણે જોઈશું આજે કે શું ડ્રોન શું છે. તો આમાંથી કોઈને ડ્રોનનું શું કોઈને માહિતી છે? વોટ ઇઝ ડ્રોન? ડ્રોનને શું કહેવાય? સર એકચ્યુઅલી જે સેશન છે એ વન વે છે, યુટ્યુબ પર લાઈવ સ્ટ્રીમ થાય છે. ઓકે. રાઈટ. સો ઇફ સ્ટુડન્ટ જો સ્ટુડન્ટને કંઈક ડાઉટ ક્વેરી હશે તો એ ચેટ બોક્સમાં ક્વેરી લખશે
and after the session we will discuss that query.
Hello, Hettal sir. હલો. હા સર, વાંધો નહીં. તમે સેશન કન્ટિન્યુ કરી શકો. તમારો અવાજ પણ આવે છે અને બેક કેમેરો પણ વિઝિબલ છે. તો આપણે પહેલા સ્ટાર્ટ કરીએ કે ડ્રોનમાં શું શું વપરાય. તો આ એક ડ્રોન છે. સૌથી પહેલા આપણે આ નાના ડ્રોન થી જોઈએ. આપણે ડ્રોનમાં કે મુખ્ય જે પાર્ટ જે છે એ મોટર, પછી આ પ્રોપેલર, પાંખ એટલે પ્રોપેલર કહેવાય, અને ફ્લાઇટ કંટ્રોલર. આમાં જુદા જુદા ફ્લાઇટ કંટ્રોલર આવે જુદી જુદી ડિઝાઇનિંગ માટે. આ એક આપણો મેઇન ડ્રોન છે. આપણે પહેલા સ્ટાર્ટિંગ એક મોટર થી કરીએ તો આ એક ટોય મોટર છે, જે જનરલી આપણા ટોયસ જેટલા પણ છે એમાં વપરાય. આ મોટર છે ડ્રોન માટેની સ્પેશિયલ. આ BLDC મોટર કહેવાય આને. આ છે આપણું ફ્લાઇટ કંટ્રોલર. પછી મોટરને ડ્રાઈવ કરવા માટે આ એક ESC આવે, એને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીડ કંટ્રોલર કહેવાય એને. બીજું, ડ્રોન ને ચલાવવા માટે મેઇન રિમોટ કંટ્રોલની જરૂર પડે આપણને. તો એમાં આ છે એનું એક રિમોટ કંટ્રોલ, જેનાથી તમે આખું ડ્રોન કંટ્રોલ કરી શકો. આ એક કેમેરો છે જે ફોટોગ્રાફી માટે યુઝ થાય. જે પણ કઈ ડ્રોન ઉડે છે તો એનું નેવિગેશન માટે GPS ની જરૂર પડે. તો આ એક GPS છે. હવે મેઇન જોઈએ કે ભાઈ ડ્રોન ડ્રોન ઉડે છે એનાથી, તો કે મેઇન બેટરી સોર્સ એનો. તો આ ડિફરન્સ અલગ અલગ ટાઈપની બેટરી છે. હવે સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે તો બેઝિક ડ્રોન. જો ડ્રોન નું જે મેઇન તમે બ્રેન ગણો તો શું છે એનું મેઇન ફ્લાઇટ કંટ્રોલર. તો ફ્લાઇટ કંટ્રોલર ની અંદર પણ જુદા જુદા પાર્ટ હોય છે બધા. તો તમે એમાં જોઈ શકો છો આ બેઝિક, એકદમ બેઝિક લેવલનું ફ્લાઇટ કંટ્રોલર છે. તો ફ્લાઇટ કંટ્રોલર ની અંદર જાયરોસ્કોપ, મીન્સ કે તમારી પોતાના ડ્રોનની એક્સિસ ને કંટ્રોલ કરી શકે. તો એમાં એક જાયરોસ્કોપ આવે છે આ. પછી એનું ડેટાને રીડ કરવા માટે જે CPU મેઇન પ્રોસેસર ગણો તો આ એક એનું પ્રોસેસર છે. આ બહુ જ એકદમ બેઝિક કક્ષાનું આ એક ફ્લાઇટ કંટ્રોલર છે. હવે થોડાક એનાથી એડવાન્સ જઈએ તો આ એક એના કરતા થોડુંક એડવાન્સ છે આ એક ફ્લાઇટ કંટ્રોલર. પછી આવે છે બીજું એના કરતા એક થોડુંક એડવાન્સ, કે જેનાથી તમે નેવિગેશન પાથ તમે આપી શકો. દાખલા તરીકે તમે જોયું હશે કે ભાઈ અમેરિકાએ એક હુમલો કર્યો કાબુલ પર કે કોઈ પણ જગ્યા પર, તો એ પોતાના ડ્રોન્સ પોતાની કન્ટ્રીમાંથી ઉડાવીને કોઈ પણ બીજી કન્ટ્રીમાં એને લઈ જઈ શકે. તો શેનાથી લઈ જઈ શકે? તો કે એ GPS ની સિસ્ટમ જે એમાં લાગેલી છે, જેમાં એને નેવિગેશન જે પાથ તમે આપો
એનાથી એ ઉડી શકે. તો આ એક થોડુંક એના કરતા ઊંચી કક્ષાનું કે આમાં તમે કોઈ પણ આ જે જીપીએસ કોઈ પણ છે, જીપીએસ ને તમે કંટ્રોલ કરી શકો. બીજું કે તમારું ડ્રોન જ્યારે ઉડતું હોય ત્યારે એને નેવિગેશન માટે ટેલિલિંકની જરૂર પડે, કે તમે જે પણ કોઈ કમાન્ડ એને આપો છો તે કમાન્ડ અને ટ્રાન્સમિટ કરી શકે અને રિસીવ કરી શકે. તો આ એના માટે એક ટેલિમેન્ટ્રી છે. તો ટેલિમેન્ટ્રી, વોટ ઇઝ ટેલિમેન્ટ્રી? તો તમારો જે પણ કોઈક એને પાથ તમે આપો એની ચોક્કસ જગ્યા પર એ ઉડે, નેવિગેશનથી કોઓર્ડિનેટ કરીને પાછું એના પોતાના પાથ ઉપર જાય, તો એને તમે એને ટેલિમેન્ટ્રી તમે એને કહી શકો. હવે ટેલિમેન્ટ્રી પછી શું આવે કે કેમેરો આવે, કે કેમેરો તમારું જે બી પાથ પર તમારું ડ્રોન જાય છે, રાઈટ, તો એ પાથને નેવિગેશન માટે તમારો એક મેઇન હાઈ વિડીયો લિંક માટે એક કેમેરો વપરાય. તો એના માટે એક વિડીયો લિંક આવે, જે આ પ્રકારનું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે, જેનાથી વિડીયો સિગ્નલ તમારો જે પણ કઈ કેમેરો છે એ કેમેરો આની સાથે જોઈન થાય, આનો વિડીયો આ ટ્રાન્સમિટ કરે અને જે તે બેઝ સ્ટેશન પર આપે. જ્યાં ગાડીથી એને ઓપરેટિંગ કરવામાં આવે ત્યાં ગાડી એના બેઝ સ્ટેશન પર એ વિડીયો સિગ્નલને ટ્રાન્સમિટ કરે. એ વિડીયો સિગ્નલ કોઈ પણ આ રીતનું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય છે કે જે વિડીયો સિગ્નલ જે તમારું આવ્યું એને ડીકોડ કરીને તમારી પોતાની સ્ક્રીન પર તમને બતાવે કે તમારું પોતાનું ડ્રોન કઈ જગ્યાએ જાય છે. આજે ડ્રોનના ઘણા બધા ઉપયોગો થવા માંડ્યા છે. મેઇન યુઝ એનો થશે મેડિકલ યુઝમાં, કે ઇમરજન્સીની અંદર તમારે કોઈ પણ દવા કંઈ પણ પહોંચાડવી હોય, પોતાના એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ કોઈ પણ મેડિસિન ઇમરજન્સીમાં પહોંચાડવી હોય. અત્યારે તમને ખબર છે કે કોરોનાની મહામારી બહુ જોરશોરમાં ચાલી, એ ટાઈમે ઘણી બધી વેક્સિનોની જરૂર પડી કે ભાઈ આ વેક્સિન આ જગ્યાથી ઇમરજન્સીમાં તમે એને મોકલાવી શકો, ઝડપથી ડિલિવરી કરી શકો. તો એના માટે આ ટાઈપના ડ્રોન ખરેખર બહુ જ ઉપયોગી છે. અને અત્યારે તો ડીજીસીઆઈ ગવર્મેન્ટે પણ હવે થોડુંક રૂલ્સ રેગ્યુલેશનની અંદર છૂટછાટ આપી છે કે ભાઈ તમે ડ્રોન બનાવી શકો. અત્યાર સુધી શું હતું કે તમારું ડ્રોન, તમે જે પણ કંઈ ડ્રોન તમે બનાવો છો તે 250 ગ્રામની ઉપર હોવું નહીં જોઈએ, 250 ગ્રામ્સ, એટલે બસ ફક્ત આટલું. એના રૂલ્સ એવા હતા કે ટેલિરિઝમને ધ્યાનમાં રાખીને ગવર્મેન્ટે રૂલ્સ બનાવેલા હતા. તો અત્યારે એમાં થોડીક છૂટછાટ આપી છે કે તમે થોડુંક મોટું ડ્રોન્સ બનાવો, ડીજીસીઆઈ એપ્રુવ કરે એ પછી તમે ડ્રોન્સને ઉડાવી શકો. પણ ડ્રોનમાં મેઇન બેઝિક શું છે કે પહેલી મોટર આવે, મોટર પછી તમારું મેઇન પ્રોપેલર, તમે આને ગણો આ કાર્બન ફાઈબર છે, પછી આવે મોટર, મોટર પછી પ્રોપેલર તમે મૂકો. તો પ્રોપેલર પણ એની ડિઝાઇન પ્રમાણે હોઈ શકે. સપોઝ માની લો કે તમારું ડ્રોન્સ, આ જે ડ્રોન્સ જે છે અત્યારે હાલમાં આપણે આને 250 mm એટલે 450 સાઇઝ, તમે આની સાઇઝ તમે ગણી શકો. તમે આ સાઇઝ તમે માપો તો આ એંગલથી આ એંગલ, આ બે એંગલ એના, તો 450 સાઇઝ એની ડ્રોનની સાઇઝ થાય. ઓકે, તો આ ડ્રોનને ઉડાવવા માટે કેટલી તાકાત જોઈએ, કેટલો ફોર્સ જોઈએ, તો એ બધી વસ્તુ તમે આને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો એનું વેઇટ કરીને. બીજું આની બેઝ ફ્રેમ, આની ફ્રેમ મેઇન છે આની, અને બેઝ વ્હીલ કહેવાય છે. પ્રોપેલરની પીચ, એનો પાવર, મોટરનું પાવર રીડિંગ, એ બધું ઘણી બધી વસ્તુઓની સાથે કન્સિડર તમારે કરી શકે. તમે મોટરની ઉપર તમે જોશો તો એક લખેલું હોય છે એની પર 28-22, આ મોટરની સાઇઝ છે. પ્રોપેલર આમાં તમારો 10 ઇંચનો પ્રોપેલર તમે લાગી શકે. કેવી રીતે? આની ઉપર જે એની સાઇઝ છે એ મેક્સિમમ 9 ઇંચ પ્રોપેલરની છે, ને આ મોટર એની 1200 કેવીની મોટર છે. મોટર એને થ્રસ્ટ આપે, આખું ડ્રોન તમારું ઉચકાય હવામાં. એને મેઇન કંટ્રોલ કરવા માટે એનું બ્રેઇન સીપીયુ, જે પ્રોસેસર તમે ગણો તે તમારું ફ્લાઇટ કંટ્રોલર છે. એને કોઓર્ડિનેટ કરવા માટે એનું જીપીએસ છે. ઓકે, હવે એને ચલાવવા માટે તમારી સોર્સ શું છે? બેટરી.
તો તમે ડ્રોન્સ તો ઘણા બધા જોયા હશે અત્યાર સુધીમાં. તો આપણા મગજમાં એક જ વસ્તુ ચાલે કે ભાઈ ડ્રોન્સ એટલે શું કે ભાઈ 4-5 ફરે અને વસ્તુ ઉડે એને ડ્રોન્સ આપણે ગણીએ. પણ ખરેખર એકચ્યુઅલી એવું નથી. હજી તમે મોટા મોટા ડ્રોન્સ તમે જોયા હશે તો ફિક્સિંગ જે છે, જે આપણા પ્લેન જે ગણીએ આપણે, જે આપણે આકાશમાં ઉડતા જે પ્લેન છે એ તમે જોયા હશે. પણ ટૂંકમાં માનવ રહિત જે પણ કંઈક વસ્તુ ઉડે છે એને તમે ડ્રોન્સ તમે કહી શકો. અને ડ્રોન તો એકચ્યુઅલી મેઇન મિનિંગ થાય છે જે મધુમાખી જે હોય, મધુમાખી જ્યારે ઉડે અને એનો જે અવાજ આવે એને ખરેખર એકચ્યુઅલી ભાષામાં ડ્રોન કહેવાય. ને આના નામ પરથી પડ્યું ડ્રોન નામ. તો તમે જોયું આજે કે ડ્રોન્સની અંદર તમે મીન્સ રિમોટ કંટ્રોલ, એનું ડેટા ટેલિમેન્ટ્રી, ફ્લાઇટ કંટ્રોલર, બેટરી, આવી રીતે એક નાનકડું ડ્રોન છે. બીજું એવું મેઇન અત્યારે જે એડવાન્સ લેવલમાં ફ્લાઇટ કંટ્રોલર જે વપરાય છે એમાં આ એક સુપર સ્ટેબલ ફ્લાઇટ કંટ્રોલર છે જે એક ડીજીઆઈ કંપની છે નાઝા કરીને, આ એનું એક ફ્લાઇટ કંટ્રોલર જે છે એક આપેલું છે. આ એક ચાર્જર છે એનું બેટરી ચાર્જ કરવા માટે. કોઈ પણ બેટરી હોય હવે એના પાવર વોલ્ટેજ ચેક કરવા માટે આ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે, બેટરી વોલ્ટેજ ઇન્ડિકેટર. તો તમને એ બેટરીનો કેટલું વોલ્ટેજ છે એ તમને બતાવી શકે. આપણે હવે મેઇન બેઝિક ડ્રોન્સનું ટોટલ આપણે જોઈશે. આ એક મોટા હેવી લિફ્ટ ડ્રોન માટેની મોટર છે. આ તો આપણે ફક્ત જોયું કે ભાઈ ડ્રોન્સની અંદર કયા કયા સામાનો, કયા કયા પાર્ટ્સ વપરાય. હવે મેઇન આપણે જોઈએ કે ડ્રોન એકચ્યુઅલી ઉડે છે કઈ રીતે. કોઈક બનાવવું હોય ડ્રોન તો કઈ મેઇન કોન્સેપ્ટ ડ્રોન ઉડે કેવી રીતે. તો પહેલું હતું કઈ કે ભાઈ હેલિકોપ્ટરની અંદર ટોટલ મિકેનિકલ પાર્ટ્સ હતા. તો એમાં શું થતું કે મિકેનિકલ પાર્ટ્સની અંદર ગમે ત્યારે ડેમેજ થઈ જાય ને બહુ કોમ્પ્લિકેશન એમાં ઉભા થતા હતા. હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાના ચાન્સ પણ બહુ હતા પહેલા. તો એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને પછી ટેકનોલોજી અપડેટ થઈ ને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એટલું બધું ધીમે ધીમે આગળ આવી ગયું કે મિકેનિકલ પાર્ટ્સને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુએ એની જગ્યા લઈ લીધી. કેમ કે પહેલા કેવું હતું કે ભાઈ આ પાંખ ફરે, પાંખ પોતે પણ ફરે અને મુવમેન્ટ પણ થાય અને એમાં મિકેનિકલ પાર્ટ્સ આવતા હતા પહેલા. તો હવે સીધું ટોટલ હવે ફ્લાઇટ કંટ્રોલરે બધી આખી એની જગ્યા લઈ લીધી. તો મેઇન જોઈએ કે હવે ડ્રોન્સ કઈ રીતે બને અને કઈ રીતે ઉડે. પહેલું તમારે કોઈ પણ ડ્રોન્સ બનાવવું હોય તો મેઇન એનો પાર્ટ બેઝ પ્લેટ કે તમે ફ્રેમ, તમે એની ફ્રેમ જે બનાવો છો એ કઈ ફ્રેમ બનાવો છો, કેટલા સાઈઝની ફ્રેમ બનાવો છો, તમારે કેટલું પેલોડ એને ઉચકવું છે.
માની લો કે તમારી પાસે તમારું 1 કિલો વજન છે, એ 1 કિલો પેલોડ તમારું ટોટલ થાય છે, તમારો વેઇટ લિફ્ટ કરવું છે, તો તમે એની એક ફ્રેમ લો. હવે એના માટેની તમારી જુદી જુદી મોટર હોય. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. 450 સાઇઝની ફ્રેમ છે, 1200 કેવીની મોટર છે, આમાં 4 મોટર. એક મોટરનો થ્રસ્ટ 800 ગ્રામ છે. એક મોટર તમે ફૂલ પાવરમાં ચાલુ કરો તો એ 800 ગ્રામ નો થ્રસ્ટ, એટલે જે પ્રોપેલર જે ફરે છે એ તમે 800 ગ્રામનો પાવર નીચે પેદા કરે. એટલે સમજી લો કે તમે 4 મોટર તમારી છે એ 3 કિલો અને 200 ગ્રામનું તમને થ્રસ્ટ આપશે આ મોટર. તો એ હવામાં વેઇટ લિફ્ટ ઉપર કરશે. બીજું કે એને ચલાવવા માટે તમારી બેટરી, તમારી જે આ બેટરીની જે કેપેસિટી છે એ કેટલી, તમારી ફ્લાઇટ ટાઈમ, તમારો ફ્લાઇટ ટાઈમ તમારી આ બેટરી પર તમને મળશે. જેટલી નાની બેટરી એટલો ફ્લાઇટ ટાઈમ તમને ઓછો મળશે, જેટલી મોટી બેટરી એટલો ફ્લાઇટ ટાઈમ તમને વધારે મળશે. પણ એની સાથે બેટરીનું પણ વેઇટ એમાં ઇન્ક્લુડ થાય. સપોઝ માની લો કે તમે આ બેટરી મૂકો છો, બરાબર છે, અને તમે 10 મિનિટનો ફ્લાઇટ ટાઈમ તમને મળે છે. એ સેમ બેટરી હું આ મૂકું છું, તો એની અગેન્સ્ટમાં આ બેટરીનો વેઇટ અને આ બેટરીનો વેઇટમાં બી ઘણું બધું અંતર થઈ જાય, તમને ડિફરન્સ મળી જાય તમને. તો એવું ના રહે કે ભાઈ હું આ બેટરી મૂકું છું ને આ બેટરી 10 મિનિટનો મને ફ્લાઇટ ટાઈમ આપશે, તો આ મને 25 મિનિટનો કે 30 મિનિટનો ફ્લાઇટ ટાઈમ આપશે. તો બધી બેટરીનું વેઇટ પહેલા વેઇટ કન્સિડર તમારે કરવું પડે કે ફ્લાઇટ ટાઈમ તમારે જોઈતો હોય તો. બીજું, તમારું તમે ફ્લાઇટ કંટ્રોલર કયું નાખો છો. ત્રીજું, જીપીએસ તમારા ડ્રોન્સમાં છે કે નહીં. ચોથું, તમારું આ રિમોટ, આ 3D પ્રિન્ટની અંદર તૈયાર કરેલી એક નાનકડા ડ્રોનની બોડી છે. આ 3D પ્રિન્ટની બોડીની અંદર તમારે આવી મોટર તમારે લાગી શકે. એમાં બહુ સસ્તું ચીપ ડ્રોન બનાવવું હોય, સ્ટાર્ટિંગમાં તમારે નાનું ચીપ ડ્રોન બનાવવું હોય તો તમે આ રીતની બોડીમાં તમે બનાવી શકો. એમાં નાનકડું ફ્લાઇટ કંટ્રોલર પર તમે આવું નાનકડું ફ્લાઇટ કંટ્રોલર પર આમાં તમે લગાવી શકો. એકદમ એન્ટ્રન્સ લેવલની વસ્તુ છે આ, બેઝિક, કે તમે કોઈ પણ 3D પ્રિન્ટના મશીન પર કે પ્લાસ્ટિકની સ્ટીક પર પણ તમે આને વસ્તુને બનાવી શકો.
આ મેઇન બેઝિક જે પણ આપણે જે ડ્રોન ઉડે છે આપણે ત્યાં, તો આના સિવાય વિશેષ બીજું ડ્રોન્સમાં કંઈ જ પણ નહીં આવી શકે. આ જેટલી ટેબલ પર જે પણ કંઈ વસ્તુ તમને દેખાય છે એનાથી તમે આરામથી તમે ડ્રોન બનાવી શકો, ઉડાવી શકો. આ મેઇન બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે ડ્રોન્સનો. કે તમે ડ્રોન જે તમે બનાવો છો કે તમે કોઈ પણ ડ્રોન જોયું, ડ્રોનની અંદર વપરાતા પાર્ટ્સ કયા કયા પાર્ટ્સ વપરાય છે એ આપણે અહીંયા જોયા. ફરીથી એકવાર એને જોઈ લઈએ. ફ્રેમમાં એક કાર્બન ફાઈબરના પ્રોપેલર હોય, આ પ્લાસ્ટિકના પ્રોપેલર હોય, પછી આવે રેટ કંટ્રોલર, બીજું આવે રિમોટ, ત્રીજું આવે એની મોટર, બીએલડીસી મોટર. જનરલી જે પણ ડ્રોન વપરાય છે એમાં બીએલડીસી 10 ફેઝ મોટર હોય છે. એમાં મોટરની અંદર પણ આગળ આપણે જોયું અલગ અલગ વેરાયટીની મોટર છે એમાં, નાની મોટી. પછી આપણે ફ્લાઇટ કંટ્રોલર જોયા અલગ અલગ ટાઈપના. આ એક એની ટેલિમેટ્રી માટેની ડિસ્પ્લે છે, વિડીયો લિંક માટેની. આ ડ્રોન માટેનું રિસીવર છે કે ટ્રાન્સમિટ કરેલું સિગ્નલ આ રિસીવરમાં જાય. રિસીવરના કમાન્ડ પ્રમાણે આ તમારું ડ્રોન વર્ક કરે. આ કેમેરો છે. આટલા બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ્સથી તમે એક સારામાં સારું એક ડ્રોન બની શકે. આજનો આપણો અહીંયા બેઝિક જે કોન્સેપ્ટ જે હતો ડ્રોન માટેનો, કે ડ્રોનની અંદર જે પણ કંઈક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ્સ જે પણ કંઈક વપરાય છે, તો મેં તમને તમારી સમક્ષ એક એક્સપ્લેન કરવાની મેં ટ્રાય કરી. Yeah, okay. Thank you, Htl sir. Hello, Htl sir. હાજી, હા સર. Yes, yes. Demonstration complete થઈ ગયું આપણું આટલું હજુ? હા, એટલે ઓલમોસ્ટ જે પણ કંઈક ડ્રોન્સમાં જે પણ કંઈક પાર્ટ્સ વપરાય એ બધા એક્સપ્લેન કરી દીધેલા છે. Sure, sure, sir. Sure, sure. So, on behalf of RNGPIT Institute of Technology, I heartily thank you for your valuable inputs and થેન્ક યુ, your થેન્ક time. યુ સર. And definitely in future, we wish you to visit our institute physically for such a wonderful workshop. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. Thank you very much, sir. Yeah, dear students, next we will try to understand the detailed information about two programs, namely civil engineering and electrical engineering. So we'll start at 1:30, the last session of today's workshop.
Yeah, good afternoon. So let's move towards the next session. So today we have with us Professor Hilai Prajapati. Professor Hilai is from Civil Engineering Department. Professor Hilai is currently pursuing his PhD from Gujarat Technological University and has published various national and research paper in various national and international journals. So I request Mr. Hilal Prajapati to please enlighten us with the activities of Civil Engineering Department of RNGPIT Institute of Technology. So over to you, Hilal Prajapati. Thank you, Vivek Joshi, sir. So my screen is visible? Yes. Okay. Very good afternoon to all. Today I am going to cover uh, career opportunities in civil engineering, so that after completion your schooling, you can have a better perspective of civil engineering. So let's go now. What is civil engineering? Basically, the civil engineering deals with design of structure, construction, and the maintenance. The physical and natural evil. Physical structure, it means the bridges design, structural component of building, road design, canal, dam, sewage system, pipeline. And the naturally built, it means okay, river, flood management system, dock and harbor management system. So civil engineering are both deal with the physically and naturally built structure. So design is a one different part of civil engineering. Then after next stage is a construction, and with respect to time, we have to maintain the structure. So with maintenance is required to increase your span of building. Now here are some specialization in civil engineering. First one is a structural engineering, then water resources, transportation, geotechnical engineering, environmental, construction management, remote sensing and GIS, and lastly earthquake engineering. Now first most important specialization is geotechnical engineering. जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है वो किसके रिलेटेड है? जो सॉइल के रिलेटेड है. तो फर्स्ट स्टेज हमारा यही आएगा कि हमें कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है कि डैम कंस्ट्रक्ट करना है. तो पहले हमें जाना पड़ेगा जियो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन. वो मेजर करेगा कि जहाँ पे आप अपनी साइट है, जहाँ पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, जहाँ आप ब्रिज बनाने वाले हो, वहाँ जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, वहाँ पे सिल्ट कंटेंट है, सैंड कंटेंट ज्यादा है या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है, वो सब मेजरमेंट करके और डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे वो बियरिंग कैपेसिटी मेजर करके किसको रिपोर्ट देगा? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या करेगा? स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बिल्डिंग आप डिजाइन करने वाले हो उसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसकी जो स्टील डिटेलिंग है, वो आपको प्रोवाइड करेगा. कितनी डेप्थ पे फाउंडेशन है, उसका डायमेंशन क्या है, कितना का आपको रोड यूज करना है स्टील का, वो सब मैनेज होगा. वो सबका सब आपको इंडिकेट करेगा. उसके बाद क्या आता है? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मीन्स सब कुछ डिजाइन हो गया, प्लान हो गया, उसके बाद क्या होगा कि हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है. तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन की जरूरत होगी. ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होगी. तो उसके लिए क्या होगा? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इट मीन्स कि कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं उसको टाइम बाउंड के अंदर कंप्लीट करना है. वो जो प्रोसेस आती है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. इट्स मीन्स कि 6 मंथ के अंदर ये घर पूरा, ये जो बिल्डिंग है वो पूरा कंप्लीट करना है, तो वो पार्ट होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का. Then after, most important is water resources engineering. It deals with the dams, canal,
pipeline, all the hydraulic structure dealing with water resources engineering. Then after transportation engineering, it deals with the roads, railway, airport, as well as dock and harbor are covered in a transportation. Then after environmental engineering specialization के अंदर क्या आता है कि वाटर एंड वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर निकलता है उसको कैसे प्योरीफाई करना है, ठीक है, और उसका कैसे रीयूज करना है अगेन एंड अगेन, वो सब आएगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और एयर पोल्यूटेंस है, ठीक है, उसके अंदर भी वो एनवायरमेंट के अंदर कवर होगा। देन आफ्टर है नाउअडेज रिमोट सेंसिंग के यूज से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना एरिया है, वो क्विक मेजरमेंट, एरियल फोटोग्राफी, टोटल स्टेशन है सर्विंग के अंदर, वो यूज होता है। देन आफ्टर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो सिस्मिक जोन के अंदर है, ठीक है, तो वो सिस्मिक जोन के अंदर है, तो वो सिस्मिक जोन के क्राइटेरिया डिसाइड, जो क्राइटेरिया है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, वो यूज करके आपको वो डिजाइन करना है, तो ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। ये सारी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, सब में अलग अलग वर्क है, सबके अंदर सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। देन आफ्टर, so here now let's discuss the future career of opportunities in civil engineering. First one is a government sector, then after construction part, then education, it means the academic field, then after industrial sector, it means the private sector, and lastly consulting. तो वो धीरे धीरे हम डिटेल में देखेंगे। गवर्नमेंट के अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो बॉडी है वो क्या है, जीपीएससी, दैट इज कॉल्ड गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी, ठीक है। तो जीपीएससी बॉडी कंडक्ट्स फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर स्टेट गवर्नमेंट लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जीडब्ल्यूएसएसबी, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी बोर्ड, एनजीएम, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है। और दूसरा है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में कौन कौन से है, जीएससीसीएल और डीजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, जीएससीसीएल इट मींस गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसी हिसाब से डीजीवीसीएल है, गेटको है, वो पावर सेक्टर की कंपनी है जहां सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। देन आफ्टर, इफ आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, देन यूपीएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके पास है सीडब्ल्यूसी, इट मींस सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। देन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट करता है। देन आफ्टर इंडियन रेलवेज, नेवी है, एयरफोर्स है, यानी ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर जीपीएससी के थ्रू जो हायर करते हैं स्टूडेंट को। इसके लिए आपको जीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जब क्लियर करेंगे, देन गो फॉर द जॉब। देन आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की उसी तरह से सीडब्ल्यूसी, एसएससी। देन आफ्टर also in civil engineering private sector opportunities are also there. First one is the L&T construction, Reliance construction, SR construction भी है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, जो लोकली अवेलेबल जो बिल्डर्स होते हैं यहाँ पे साउथ जोन के अंदर है, राजन्स है, अवध है, हैप्पी होम है, मल्टीमीडिया कंस्ट्रक्शन है, वो सब कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर कवर हो जाएंगे। देन आफ्टर सापोरजी एंड पालोनजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बिल्डर ग्रुप है जो पुणे से एक्टिव, मुंबई के साइड एक्टिव होता है। यानी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को ऐसा है कि गवर्नमेंट में नहीं जाना है और प्राइवेट सेक्टर में ही करना है, देन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। उसके बाद अगर इफ एंटरप्रेन्योर, इफ आपको ऐसा है कि बिजनेस करना है, ठीक है, खुद का बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, देन आफ्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अप्रूव लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा, ओके, उसके बाद आप स्ट्रक्चर की डिटेलिंग के साथ सब कुछ दे सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम करना है, गुजरात पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अंदर काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव जो लाइसेंस है वो आपको इशू करवाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेज में लाइसेंस आएगा, ठीक है। देन आफ्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्टर, उसके लिए भी आपको सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या वर्क करना है,
तो वहां से इश्यू करवाना पड़ेगा। वीएमसी है वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन आफ्टर है कि गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सब आप लाइसेंस इशू करवा के उसके रिलेटेड जो वर्क है वो टेंडर फिलअप करके आप कर सकते हैं। देन आफ्टर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे सिर्फ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ही वर्क करना है, देन वो कौन सा करेगा, जीआईडीसी जो है होती है उसका लाइसेंस इश्यू करेगा और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। देन आफ्टर further foreign studies and opportunities available in different countries, different university, and lots of opportunities are available in foreign countries also in civil engineering. First one is Canada, USA, Australia, New Zealand. All the countries are, so many countries are covered opportunity in civil engineering. मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वो रिलेटेड है सिविल एंड एनवायरमेंटल। देन आफ्टर गो फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, देन है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, वो स्पेशलाइज इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, वो रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट में आप करना चाहते हैं, देन स्ट्रक्चर है एनवायरमेंट, देन गो फॉर द कैलगरी। देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वो है ये एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। सो बहुत सारी फॉरेन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। देन आफ्टर दिस इज अवर स्टाफ प्रोफाइल, हियर इज अवर स्टाफ प्रोफाइल with different specialization and with highly qualified and experienced faculty. Specialization mentioned over here, structure engineering, then different environmental, again structure, transportation, geotechnical, again transportation, then after irrigation field के अंदर water resources, then hydraulic structure, again irrigation के अंदर water resources, and then lastly is a structural engineering. Okay. The list of laboratories available in our institute. First one is a ECE, that is a surveying. It covers surveying and advanced surveying, then geotechnical, then highway engineering lab. It related to the transportation, road, bituminous test, all cover in the highway engineering lab. Fluid mechanics lab, ठीक है। देन हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स जो मेजरमेंट होता है वो इसके अंदर कवर हो गए। देन आफ्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, देन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एंड लास्ट इज अ कंप्यूटर लैब। इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर कवर होते हैं, लाइक बिल्डिंग टाउन प्लानिंग के लिए ऑटोकैड है, देन स्ट्रक्चर के लिए ई टैप्स है, सैप है, देन आफ्टर पाइपलाइन डिजाइन करना है ईपानेट है, फ्लड स्टडी के लिए है हैक्रेस है, हैक एचएमएस है, ArcGIS है। These all subjects are taught in our institute. Okay, these are some industrial technical visit conducted by civil engineering department, like Ambuja cement plant, Surat, then Anjana bridge, Vasda, Cavalstray bridge, Surat. Again, for BTP, Lavasa plant city. Then for hydraulic structure, Sardar Sarovar Dam. Then Madhubad Dam. For water and wastewater, PEPL, Palsana. All are technical visit. So these are our placement data. Students are, so many students are placed in M Square, NKSA, then after PDAS infrastructure, Torrent Power, Ahmedabad, then after Divyesh Kumar Chaudhary are in water resources investigation of subdivision department of Kutch in the irrigation department, then Pyramid Industry के अंदर है, then after Brijesh Patel are in the assistant engineer SSNL Bharuch, then after Surat Municipal Corporation in Nidhi Bhavsar. Okay, so many students. Okay, this is our civil engineering department GTU result with zone rank and state rank. In the particular civil 10 result in 6th semester, you know, highlighted by red marking, zone rank 1 and state rank is 2nd. So you can show that कि जितना भी रिजल्ट्स है वो सब टॉप 5 के अंदर कॉलेज स्टैंड कर रही है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अगेन सिविल 12 का आप देख सकते हो
7 सेमेस्टर के अंदर रेट मार्किंग के साथ फर्स्ट जोन रैंक एंड अगेन फर्स्ट स्टेट रैंक, अगेन सिविल 13 के अंदर जोन रैंक फर्स्ट, अगेन स्टेट रैंक फर्स्ट, देन आफ्टर सिविल 16 के अंदर आ जाते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जोन रैंक है 18 कॉलेज में से फर्स्ट एंड थर्ड रैंक है 105 कॉलेज में से थर्ड रैंक। ओके, सो ये सारे रिजल्ट्स है जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जीटीयू के। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yeah, thank you very much, Hilai Prajapati sir, for giving information about Civil Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology. So let's wait, student, for 2 minutes. We will have another expert and speaker with us. We will take him in our session. Please wait a moment. Yeah. So now with us, Dr. Sheikh Mohammad Sohail. Sir is a head of Electrical Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology, having more than 14 years of academic experience. Sir has completed his PhD in the field of electrical engineering. Sir is very active as a researcher and having more than 8 research papers published in different national and international journals and conferences. So on behalf of RNG Patel Institute of Technology, I heartily welcome Dr. Sheikh Mohammad Sohail sir. And now I request Sohail sir to please enlighten us with the information about Electrical Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology. Over to you, sir. Thank you, sir. So, first of all, good afternoon to all listeners who are listening to me right now. So, let me just give some information related to my electrical engineering department. Uh, just a 2 minutes. Sir, is my screen visible? PPT. Right now, screen is visible. Okay. Sorry. So, this is our electrical engineering department. So, let us start with first what is the vision of our electrical engineering department and what are the missions that we are targeting to achieve this vision. So let me proceed with this. First of all, I will try to explain you that what is electrical engineers, what is electrical engineering, and what as a student you are going to learn in this particular field. Remember,
Electrical engineering, in a single word, you can say that it is manipulate the power. It will control the power. It will, let us say, modify the power as per the requirement. Okay, so you can consider the electrical engineers those who are working with the energy transformation. When in the generating station, the mechanical energy are converted in the form of electrical energy. That electrical energy will transform to our home or industries. And then this electrical energy converted again in the form of the energy that we require. Okay, so these are the, let us say, definitions of electrical engineering. So it is the branch of engineering science that studies the usage of electricity and the equipment for power generation and distribution and the control of machine and communication. So these are, you can say that, the sub areas where you can find out the electrical engineers are going to be work. For example, let us say this is the first area where you can say that the power. So power equipment like transformers, instrumentations, computers, telecommunication, control, electronics, microelectronics, signal processing. These are the, you can say that, sub-disciplinary area where electrical engineers are going to be work. So, what are the scope of electrical engineering? The most important thing when we are going to, let us say, choose a branch, we first have to understand what are the scope of electrical engineering. Remember, electrical engineering is the core of a engineering field that is the evergreen in terms of scope of job perspective. Electrical engineering is the heart of whole engineering discipline, and therefore its scope will never fade even many years from now. In many years ago, Tesla was the first who invented the induction motor, from where we will start journey of the electrical engineering, and now we are having a, let us say, electric vehicle with the same name of Tesla, and still we are, let us say, the scope of electrical engineering are still you can say that the growing areas. So whenever we start with the try to understand the electrical domain or electrical engineering domain, whenever we met the students and when they are confused with any stream, which stream they have to select, I always, let us say, advise them to first of all go through the areas, domain, syllabus. What are the subject that you are going to cover? That will give you the rough idea. I'm not saying that you have to learn everything in on a, let us say, after 12. First of all, before selecting your branch. But definitely, whenever you want to select your branch, you have some rough idea that what you are going to learn in this particular thing, and what are the scope that I will going to cover again with this particular subject area. So first, our electrical engineers, when enter in our branch, they are going to learn the power generation, how energy will generate it, how electrical energy will generate it. So these are, you can say that, the thermal power plant, hydro power plant, okay, renewable energy, that is a solar and wind. They all are covered as a electrical engineering student will going to be learned. So this is the first thing. Remember, whenever you select any domain, you first have to learn, understand what you are going to study in this particular domain. Okay. So I hope this first part is going to be clear, that our engineers are going to first learn how power is going to be generated. They will cover a thermal power station. They will cover a thermal engineering. They will cover a, let us say, hydro power generations. There are different kind of other power generation topology like nuclear power generations. So these are going to be aspects that our electrical engineers are going to be learn. The second thing is that powers are generated may be possible, let us say, far located from your places. कहीं और पावर जनरेट हो रहा है और आपको आपके घर में या आपको इंडस्ट्रीज में आपको जहाँ पे चाहिए, तो पावर ट्रांसमिशन में हमारे बच्चे, लेट अस से, पावर सिस्टम, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है हाउ पावर इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड, कितने पावर, कितने वोल्टेज लेवल पे अपना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, वेदर इट इज हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन, वेदर इट इज लेट अस से डीसी ट्रांसमिशन. So these are the areas that we are going to cover, that is high voltage engineering. Okay, so power systems. So these are the things that we are going to cover in power transmission section. The third section and very important section, where this power, जो power आपने generate किया है, वो कहाँ utilize होगा. So major area, आप जो भी power generate करते हो, lighting को छोड़ के 80% of your load और 80% of your power will be consumed by a machine. ये मशीन किसी भी तरह की हो सकती है. लेट अस से यहाँ पे जैसे मैंने रखा हुआ है फर्स्ट इंडक्शन मोटर,
सो पूरा डिटेल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मशीन जो इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, ये सारे जो एस्पेक्ट है, जैसे कि ये आप स्टेपर मोटर, बीएलडीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, ये सारे जो मशीन है वो आपको मशीन चैप्टर, और ये आप कह सकते हो एक मशीन पूरे सब्जेक्ट के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है। दूसरा एक एस्पेक्ट जो मशीन यहाँ पे कवर कर रही है, दैट इज द ड्राइव्स एरिया। ड्राइव्स एरिया मतलब मशीन एज वेल एज द कंट्रोल ऑफ द मशीन। सो मशीन जब इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, या आप कह सकते हो लेटर से परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, बीएलडीसी मोटर, ये सब मशीन जो आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन में लगेगी और कहाँ वहां पर उसका क्या कंट्रोल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपको दिखाया हुआ है, दैट इज लेटर से इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिस इज इमर्जिंग ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप इंडक्शन मोटर और मे बी पॉसिबल परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर और बीएलडीसी मोटर, डिपेंडिंग ऑन द पावर रेटिंग्स, आर गोइंग टू बी यूज। तो ये सारी जो एरियाज है, ये यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो लर्न करेंगे, दैट इज फ्रॉम द सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। जब आप लिफ्ट में बैठते हो, दैट लिफ्ट्स आर आल्सो लेट अस से वन काइंड ऑफ ड्राइव्स, जहाँ पे आपकी मशीन्स इंडक्शन मोटर होती है जो वेरिएबल स्पीड के साथ आपकी लिफ्ट को ऊपर या नीचे एज पर योर रिक्वायरमेंट ले जाती है। लेट अस से अगर मैं आपको ट्रैक्शन एप्लीकेशन की बात करूं, दैट इज अगेन अ मेजर एरियाज ऑफ द ड्राइव्स। आपके घर में लगने वाला सिंपल एसी भी, एयर कंडीशन भी अगेन वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ अ ड्राइव्स एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आप इन्वर्टर एसी लगाते हो, वहां पे कंप्रेसर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए दैट इज गोइंग टू बी अ ड्राइव्स एप्लीकेशन। सो ये जो एरियाज है, दिस इज अ मेजर एरियाज दैट वी आर गोइंग टू कवर इन अवर इलेक्ट्रिकल डोमेन, दैट इज मशीन, machine design and drives aspect. The next area that our students are going to be learned, that is the control systems. We all know that the control systems, that is the closed loop control systems, आप कई जगह पे closed loop control system को आप फेस करते होगे, आपको पता नहीं होगा that is a closed loop control system। जब आप आपके लेटेस्ट से एसी के अंदर आप टेम्परेचर सेट करते हो, उस टेम्परेचर पे पहुंच जाने के बाद जो आपका एसी स्विच ऑफ हो जाता है या आपका जो कंप्रेसर बंद हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ने उसे एक सिग्नल दे दिया हुआ है कि आपका टेम्परेचर जो है वो आपका अचीव हो चुका है। दैट इज व्हाट द कंट्रोल सिस्टम। जहां पे दूसरी एक ब्रांच जो जहां पे निकल के आ रही है, दैट इज ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज। ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज जिसके अंदर हम पीएलसी और स्काडा जैसे डिवाइसेस है, तो वो चीज हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लर्न करते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी लर्न, दैट इज अ ऑटोमेशन, और यू कैन से दैट आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑन थिंग्स। जो स्मार्ट होम अप्लायंसेस है, जो स्मार्ट डिवाइसेस है, जहाँ पे आप आपके मोबाइल से किसी डिवाइस को कंट्रोल करते हो। अगर आप घर में नहीं हो और आप चाहते हो कि आपके घर में आपका फैन जो है आपके जाने से पहले या आपके जाने के बाद बंद हो जाए, आप चाहते हो कि आप घर पे पहुंचो उससे पहले आपके घर के अंदर का एसी स्टार्ट हो जाए, दे ऑल आर नोन एज अ स्मार्ट डिवाइसेस। तो स्मार्ट डिवाइसेस के लिए आपको क्या चाहिए, दैट इज आईओटी। तो आईओटी इज गोइंग टू बी कवर्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सी, एंड अगेन द सॉफ्टवेयर दैट इज पाइथन एंड मैटलैब। Remember embedded C, or you can say that let us say microcontrollers, these are cover a major part of, or you can say that a major areas where you can say that the smart devices are going to be utilized। आप जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस देख रहे हो, जैसे कि आप अगर मोबाइल देख रहे हो, उसके अंदर जो प्रोसेसर या कंट्रोलर लगता है, आप लेटेस्ट से एक एटीएम मशीन में चले गए, दैट इज वन काइंड ऑफ एम्बेडेड प्रोडक्ट। आप लेटेस्ट से रिमोट कंट्रोल को देख लीजिए, तो दैट इज अगेन वन काइंड ऑफ एम्बेडेड प्रोडक्ट। सो ये एम्बेडेड प्रोडक्ट का जो प्रोग्रामिंग है, दैट इज अ स्पेसिफिकली प्रोग्राम फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एम्बेडेड प्रोडक्ट। ये सारी चीजें कहां पे कवर हो रही है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ लेट अस से इन सब्जेक्ट, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। Again, along with the microcontroller, to program that devices you have, or you may be learn, that is C language. Sometimes we will teach a student Python language, sometimes MATLAB. So MATLAB based, let us say, a programming approach. So these things are going to be covered in this area. Remember, हर programming करने वाला student जरूरी नहीं है कि computer domain से ही हो. You must be in electrical engineering. You have a, let us say, some areas where you can find out your applications of programming. जो जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज जरूरी है, और आप धीरे धीरे वो प्रोग्रामिंग सीख के आप आपका एरिया बना सकते हो। सो जब भी आप किसी ब्रांच को सिलेक्शन के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरियर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे आर गोइंग टू बी प्लेस्ड।
सो पहला जैसे कि मैंने यहाँ पे फील्ड जॉब लिखा हुआ है, दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट प्लेस होते हैं। काफी गवर्नमेंट सेक्टर्स है जैसे कि DGVCL, MGVCL, PGVCL, जेटको, ये सारी जो कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ड और प्राइवेट सेक्टर बेस्ड जो कंपनीज, फॉर एग्जांपल टोरेंट की अगर हम बात ले ले, ठीक है, तो ये सारी जो है जो आपको ऑन फील्ड जॉब के लिए तैयार करती है। अगर हम रिसर्च के बेस पे बात करें, जैसे कि अगर हमारा स्टूडेंट सेलेक्टर से वांट टू pursue MTech, higher studies from PhD, so they can pursue or they can select the field as a scientist. कहाँ पे उसकी जॉब लग सकती है? दैट इज अगेन फ्रॉम इसरो, BARC, DRDO, एडा, जो कि बड़ोड़ा में सिचुएटेड है, ठीक है। अब अगर हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो आफ्टर बैचलर ये ऑप्शन भी आपके लिए हमेशा खुला रह सकता है कि अगर आप MBA करना चाहते हो, MBA इन ऑपरेशन, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग, पावर मैनेजमेंट, ये सारे सेक्टर्स है अगर मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट्स वर्क करना चाहते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो देयर आर लार्जर नंबर ऑफ स्कोप दैट आर अवेलेबल नाउअडेज। अगर हम सोलर इंस्टॉलेशन, EV मैन्युफैक्चरिंग, अब जहाँ पे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू बी अ मोर डोमिनेंट फैक्टर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV चार्जिंग स्टेशन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे टाटा पावर, बेल, दे ऑल आर रिगरसली वर्किंग ऑन EV चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि टाटा जो है अभी हमारे इंडिया में काफी रिगरसली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम फोर व्हीलर सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि टाटा नेक्सॉन हो गई, अभी टियागो हो गई, दे ऑल आर working on EV manufacturing and EV charging station, and obviously they require to work some engineers in this area. अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम कोर एरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, स्मॉल एरियाज जहाँ पे एम्बेडेड प्रोडक्ट, IoT, ऑटोमेशन, ये सारे एरियाज है जहाँ पे आपको जॉब आपके कैरियर के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी किसी ब्रांच को सिलेक्ट करो, आपको ये हमेशा सोचना है कि व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस फॉर यू पीपल। नाउ लेट अस प्रोसीड अगेन। सो जैसा कि मैंने कहा व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर यू, तो प्राइवेट सेक्टर की जैसे कुछ कंपनी और पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनी जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। ओके, जैसे कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, क्या आपके पास ऑप्शंस है, दैट इज NTPC, NHPC, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें, ONGC, IOCL, HPCL, गेल, ये सारी कंपनी। अगर हम गुजरात गवर्नमेंट सेक्टर की में बात करें, जैसे हमारे पास लेटेस्ट से DGVCL है, जेटको हो गई, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल रहती है। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली अब हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बात कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, आई एम डॉक्टर शेख मोहम्मद सुहेल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड दिस ऑल आर द माय टीम मेंबर। क्या फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेगी, सो थोड़ा सा मैं उसकी ग्लिम्स दे देता हूँ। वी हैव अ लेबोरेटरी फैसिलिटी, सो डिफरेंट टाइप ऑफ 16 लेबोरेटरीज विद द डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास हो गई मशीन लैब, हो गई हम पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, हो गई कंप्यूटर लैब, हो गई जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सीखोगे, जैसे कि मैटलैब हो गया, पाइथन हो गया। सो दीज आर द latest lab facilities. I also again request you that whenever you select the branch, whenever you select the college, you must have to visit their laboratories, जिससे आपको पता चले कि वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज है और आपको क्या सीखने या क्या सीखने मिल सकता है। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास वी आर हैविंग सोलर बेस्ड लेबोरेटरीज डेडिकेटेडली डिजाइन फॉर सोलर, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सोलर। Again, we have a dedicated industrial automation laboratory. Again, we have IIT Bombay, that is E-Enter based tinkering lab laboratory facility, जहाँ पे आपको बहुत ही एडवांस कंट्रोलर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पे आपको 8 मेगा 328 से लेके आपको एडवांस 32 बिट कंट्रोलर तक का नॉलेज दिया जाता है। ओके, यहाँ पे आर्डिनो कंट्रोलर, तो अगर आपने नाम सुना हो तो उसकी पूरी नॉलेज यहाँ पे आपको इस लेबोरेटरी के अंदर दी जाती है। जब भी हम ट्रेनिंग की बात करें, हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो कि अब 8 सेमेस्टर के अंदर ट्रेनिंग जो है कंपलसरी हो गई है, तो वी हैव डू सम MOU विद डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो ये यहाँ पे उसके नाम से, जहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए जनरली अप्रोच करते हैं। डिपार्टमेंट दूसरी कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, तो हमारे स्टूडेंट्स को भी रेगुलरली विजिट इंडस्ट्रियल विजिट, ये नंबर लिखे हुए हैं जहाँ पे मैंने नीचे, कितनी एक्सपर्ट स्पीच हमने ऑर्गेनाइज की, जहाँ पे हमने बाहर से दूसरे एक्सपर्ट को बुला बुला के हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। वी हैव ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, सेमिनार, वी हैव ऑर्गेनाइज सम ट्रेनिंग्स। फैकल्टीज की इम्प्रूवमेंट के लिए वी हैव ऑर्गेनाइज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। So these are the things that we are going to
cover to regularly update our students. So this is what the electrical vehicle, जैसे मैंने आपको बताया, these are nowadays a trending for the electrical engineers, trending topic for the electrical engineers. So we have organized electrical vehicle where we actually invite the faculties from let us say SUNIT. So different organization is also involved. So these are the, let us say, we provide the online training during the COVID section. So this is the snapshot that we am going to share when our students are visited ABTB Baroda, okay, Navsari Grid. We have invited expert speech, just I talked to. So these are the some, let us say, a snapshot that our experts from different industries and also different institutes are going to visit and explain the concepts of electrical engineering. So these are again short-term training program that we are organized. So this will give you just some idea that what kind of activities are going in this particular college. So this is what knowledge of industrial automations and PLCs are going to be shown on your screen. We are organizing the seminars. Okay, these are the projects that are developed by our students, and we will invite the expert. Okay, so that they will give the suggestion to students that what are the things that need to be incorporated for the future aspect. Sometimes students will also having a good idea, so we are having a SSIP stage, student startup innovation program, where student will getting the grant, so that their idea going to be ultimately in form of from idea to concept. If they want to design some prototype, they the SSIP cell will help you to provide the grant. So these are the you can say that the snapshot where our students are receiving the amount for their prototype model. So these are the some snapshot, or you can say that the newspaper where our students' projects are going to be recognized. Are recognized. Okay. These are the results. So you can see here the rank of our electrical department, zone wise rank also you can see here. These are the result of achievement. Students are achieved the first rank. They also obtained the gold medal. So now let us check out the placement. This is a very important aspect. Job. स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्लेसमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमने आपको ये नंबर ऑफ द डिजिट ये आपको दिखाए हुए, दैट इज द वेयर आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी प्लेस्ड. कई लोग एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, जिस आर गोइंग टू बी गेटिंग अ जॉब, और कई लोग जो इंडिया या अब्रॉड में हायर स्टडीज के लिए चले गए, या तो वो एमएस कर रहे हैं या तो एमटेक या पीएचडी के लिए इन्होंने अप्रोच किया हुआ है. सो ये है हमारा जॉब रिक्रूटमेंट. ये गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट है, दैट इज फ्रॉम द बेस ऑफ लेटेस्ट ईयर 2021. ये जो डेटा है कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट की यहाँ पे पुट हो रही है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट हाउ योर इंजीनियर, व्हाट आर द नेम ऑफ द कंपनी, GSECVL, DGVCL, MGVCL, ये कितने इंजीनियर्स को लेटेस्ट से एवरी ईयर्स यहाँ पे वैकेंसीज के नंबर में पुट करिए. आप जेटको की देखो, दैट इज 300, राइट. नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अराउंड 300. पावर ग्रिड की देख लो आप, दैट इज 48. तो ये आपको ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जाना चाहते हो. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट. सो ये काफी अभी मैं ये रिसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम द याजाकी कंपनी. सो दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर 2022 बैच पास आउट दैट आर सिलेक्टेड इन द याजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये कुछ प्लेसमेंट में आपको प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर पास आउट 2021 के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. दे आर सिलेक्टेड इन केपी एनर्जीज, स्टेलाइट पावर, रेडियंट, स्टेलाइट पावर. 2022 के अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका प्लेसमेंट स्टिल इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू. These are the some old placement news from 2020. These are the students selected in Tata project, Velox Automation, Tata Motors. These are the students selected in Vari, Siemens, okay, as a control engineers, as a quality engineers. These are the students selected in Tata Project Limited as a project engineers. These are the record of our past students. Few students are also selected in SR
They work as a engineers or supervisor or as a designer. This is SSM Infotech. They selected our student for design engineering, junior project engineering, executive officers, Apar Industries, L&T, Adani. Students are selected in Reliance Industries. Some students are selected in Geo as engineers. This is a student selected in government sector as a junior engineer PGVCL. This student is selected in junior engineer in Indian Railway. These are the students selected in government sector, JETCO. So you can see here there are lots of opportunities in terms of Torrent. Torrent is vigorously selecting or recruiting the electrical engineers. So you can see that this is the number. Okay, so remember the placement and what I convey you that whenever you want to select any branch, first of all you have to go through the syllabus. So you will get some idea that whether you can or you are having an interest on that branch or not. First of all, you have to do this thing. After that, what are the career? What are the career options for you available career options? What are the job perspective? Whether you can work, whether you are available or whether you can work on let us say as an entrepreneur or not. Okay, individual, can you work as an individual after let us say completion of your graduations or not? You have to see all the aspect and then you have to select your branch. Okay, so with this I will conclude this my session. Thank you. Yeah, thank you very much, Soil sir, for providing the detailed information about Electrical Engineering Department of RNGPIT Institute of Technology. So, dear students, so we are at the end of Design Bootcamp 2022. So, on this occasion, I would like to thank the management of RNG Patel Institute of Technology and Principal Dr. Latesh V. Chaudhary sir for providing us the resources and support to organize this online bootcamp. So the student who have registered for this bootcamp will receive certificate through online media. You will receive your certificate either through WhatsApp or mail within a few days. We have a huge numbers of registration, so the work will get delayed by a week. So be patient, and if you have any query, any doubt, you can always contact me. So thank you very much for all your support. Thank you.